the effects of unprecedented and devastating COVID-19 pandemic, which affected the whole world, we are back in business with a renewed zeal and enthusiasm. I wish the organizers of this event success in the conduct of Ideas 2022 and look forward to an overwhelming participation from defense industries from inland and abroad. We would warmly welcome the foreign defense delegates and trade visitors to Ideas 2022 to be held in November this year after a gap of 4 years. I also congratulate all the defense-related as well as other business-associated community and media houses who have selected the mega event of international repute for participation and sponsorship. I thank you all. Pakistan, Mindabad. ठंडा ठार पियो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। नींबू पानी आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो ये तमाम चीजें मवेशी मंडी में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के इंतजामात भी यहाँ पर मौजूद है। ठंडा ठार पिए, नींबू पानी, मुख्तलिफ शरबत, जूसेस, हर चीज मौजूद है। और अगर आपको कोई पकोड़े, जलेबी, समोसे शाम के वक्त खाने का मूड हो तो हर चीज आपके लिए यहाँ पर दस्तयाब है। बहुत सारी चीजें, मुख्तलिफ स्टॉल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर आपको छोटी मोटी परचून की दुकान भी आपको अवेलेबल होगी। तो मवेशी मंडी में हर चीज आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। Merhabalar, Ergin Akyüz, Trabzon Silah Sanayi Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapıyorum. Firmamız 1993 yılında Trabzon'da kuruldu. Entegre tam kapasite üretim tesisi, yarı otomatik tabanca üretimi yapıyoruz. Markamız Zigana. Firmamızda yarı otomatik silahlar Zig 14, 1911, Zig 1911, PX9 polimer silahımız mevcut. Bunun yanında kendi üretimimiz ve kendi dizaynımız olan Zigana serisi, Zigana Sport, FK modellerimiz de mevcut. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. I'm Wasif Rahman. I'm GM Corporate and Defense Sector of Inotech. Inotech Pakistan Army के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा स्टॉल है and this Ideas exhibition is an amazing experience. मैंने पहले तो as a visitor बहुत exhibitions attend किए हैं, but as a visitor it is a unique experience. और यहाँ पे organizers ने जिस तरह काम किया है दिन रात, it is worth mentioning. Ideas is such a wonderful platform for networking. दुनिया भर से लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे स्टॉल के ऊपर दुनिया भर के लोगों ने, स्पेशली मिडिल ईस्ट, सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। इनकी मिलिट्री फोर्सेस ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है। एंड वी आर रियली होपफुल कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये आइडियाज़ जो है एक बहुत लकी जॉब साबित है। एंड टू टॉक अबाउट माई कंपनी, वी आर Inotech, we're a technical IT solutions providing company.
We deal with all sorts of IT solutions, may it be ERP, may it be cybersecurity, may it be data center establishment and management, may it be software development, application development. You can name anything: hospital management system, hotel management system, tourism management systems. You name it and we do it. So this is the right platform. We have a strong base of 650 plus highly qualified and experienced colleagues जो कि दिन रात काम कर रहे हैं. They have put up a wonderful show. हमारा एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोडक्ट है with the name of AI based auto SIM solution. इसका कस्टमर हमारा जो है, it is a multi-trillion dollar company known as Aramco in Saudi Arabia, and Saudi Telecom is also our customer. And we wish कि इस किस्म की एग्जीबिशन जो है वो बैंड की जगह 2 साल की जगह हर साल हो. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. तासीर अहमद मेरा नाम है. मैं बेसिकली असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ. ये हमारा बेसिकली स्टॉल है अलबशीर कस्टम फैब्रिकेशन का. ये अलबशीर ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे पास टोयोटा की डीलरशिप्स हैं, एमजी की डीलरशिप है, जैक फॉरलैंड ट्रक की डीलरशिप है, 2-3 हमारे पास चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं, और उसके अलावा हमारा कस्टमाइज फैब्रिकेशन का काम है. ये जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं जिनमें एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक्स, रेस्क्यू व्हीकल्स, कार्गो ट्रक्स, लग्जरी व्हीकल्स, मोटर होम, ये जितनी किस्म की गाड़ियाँ होती हैं सब पे हम फैब्रिकेशन करते हैं. और इसके अलावा हम EN सर्टिफाइड भी हैं, सी सर्टिफिकेशन भी हमारे पास है, ISO सर्टिफिकेशन भी है हम. और इसके अलावा तमाम किस्म के जो ब्रांड्स हैं हमारे पास, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो व्हीकल सेल के अंदर भी हमारी जो है वो सारी चीज़ें हैं. और उसके अलावा कंप्लीट सोल्यूशन हम ऑन व्हील्स प्रोवाइड करते हैं. उसमें आपके पास कोई भी गाड़ी हो, वो टोयोटा हाईएस हो, वो आपके पास कोई फायर ट्रक है,
या किसी भी किस्म की गाड़ी है उस पर आपने कुछ भी बनवाना हो तो हम उस पर बना देते हैं। ये हमारा ओवरऑल है। हमने यहाँ पे एक्सपो पे आए हुए हैं, या देख रहे हैं हमने एक फायर बाइक लगाई हुई है, यहाँ पे रेस्क्यू बाइक है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहाँ के ऊपर हम फायर बाइक ये लेके जा सकते हैं। इसके अलावा पीछे एम्बुलेंसेज भी हैं और छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी भी है। इन सब पे हमने जो है वो यहाँ पर हमने स्टॉल में एग्जिबिट की हुई है लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. I'm Rabia Pirzada. I'm the marketing manager at Pakistan Oxygen Company. Pakistan Oxygen is in operation since 1935. So before creation of Pakistan, that time it used to be Indian Acetylene Company, and from then it changed its several names. It became Pakistan Oxygen, then it changed to British Oxygen, Linde, and we are back to Pakistan Oxygen from 2019. Basically, we are the leading manufacturer of industrial and medical gases, and we have a huge portfolio, and you can call it a one-stop solution for the hardware needs of industry. Ideas is a very good platform to exhibit what Pakistan is doing, and as to our company, we can see many international exhibitors over here, and we can promote our products outside of Pakistan. We have served in COVID days and received appreciation letter from NCOC as well. People who are coming over here, when they see the name of Oxygen, they ask us that what we have been doing or how we have served the country in COVID days. And even people outside of Pakistan, they feel glad to learn that about our services which have been in the crucial days when Pakistan was going through very difficult times. We are the first company in Pakistan who has imported a European manufacturing plant for electrodes, and our very renowned brand, they comprise of Zorian, Fortrex, Matador, 47, 48. In COVID days when people were running after oxygen and weren't finding it anywhere, that time we launched this portable oxygen canister. It's indigenous product. This is a 13-liter can of oxygen, which is, you can see it weighs just half a kg, and it allows 250 puffs. So it was very much in demand in COVID days when people weren't finding oxygen. They would keep it at home. Pakistan has been importing this product for many years. Now we are manufacturing it in-house completely. This is basically, it is installed on the tanks, the storage tanks. They could be liquid storage tanks or grains, whatever. So what it does, it gives you the real-time data of what inside the tank is. For example, there's a liquid oxygen tank which is installed in a hospital, and hospital doesn't realize that what level inside is and when do they need to replenish it. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
अस्सलाम वालेकुम। आइडियाज 2022 के स्टूडियो से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट और आज उसका चौथा और आखिरी दिन है। तो फिर तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद होने वाले आइडियाज 2022 आज ख़त्म हो जाएगा। रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट्स एक मरतबा फिर दिखाई दिए, रिकॉर्ड जितने भी एग्जिबिटर्स थे वो भी दिखाई दिए, कई कंपनीज यहाँ दिखाई दिए। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के माशी हालात बेहतर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनीज ने ऐसी प्रोडक्ट रखी कि जो आने वाले वक्त में रोजगार के मौके भी फराहम करेंगी। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह ज़रूरत बनेगी। इस तरह हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें हमारी फोर्सेस ने कई ऐसी नई चीज़ें रखी हैं कि जो काबिल दीद थी, और जितने भी इंटरनेशनल बंदूक यहाँ आए हुए थे, जितने भी डेलीगेट्स थे वो खासे मुतासिर हुए और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। दो इम्पोर्टेंट शख्सियत जो स्टेक होल्डर हैं इस आइडियाज़ 2022 के, इन्होंने अपनी कैसी इनकी यहाँ पे इस साल अगर मैं बात कर लेता हूँ या इस आइडियाज़ 2022 की बात कर लेता हूँ तो कैसा रहा इनके लिए, बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है मिस्टर सईदुर रहमान, ये डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है कस्बा इंडस्ट्रीज के। थैंक यू वेरी मच सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़हूर सरवर साहब, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के रुकन है, जबकि इनकी अपनी कंपनी सरवर इंजीनियरिंग हाउस ये भी ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहा है। इनसे ज़रा बात करेंगे कैसा रहा आइडियाज़ 2022। सईद साहब कैसा रहा, सवाल सिंपल सा, आइडियाज़ 2022। बेसिकली आइडियाज़ 2022 को हमने इस्तेमाल किया है कि हमने अपनी प्रोडक्ट कंपनी को लॉन्च किया है, क्योंकि हमारी नई कंपनी का नया सेटअप था, तो हमने इसमें भरपूर शिरकत की है ताकि हमारी लॉन्च अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल और इंटरनेशनल कस्टमर्स को हम अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकें और उनको अपने बारे में बता सकें कि ये कंपनी नई शुरू हुई है। बेसिकली हम एक्सपर्ट हैं एयर डिलीवर्ड वेपन्स की डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग और क्वालिफिकेशन के। ये सेटअप हम नया इसलिए बना रहे हैं कि हम इसी चीज़ को एक स्टेप आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि हम इन सारी प्रोडक्ट्स को सीरियल प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएं। उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन ये है कि हम लोकल वेंडर को ही इस्तेमाल करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड काम करें कि सारे मैकेनिकल आइटम पार्ट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं और कंपोजिट के जो पार्ट्स हैं वो सारे हमारे लोकल वेंडर्स बनाएं और हम उनके साथ इंगेज हों फुली, ताकि हम उनके क्वालिटी एस्पेक्ट को देख सकें और हम अपने सेटअप में उन सारे पार्ट्स को लाके उनकी फाइनल इंटीग्रेशन अपने हाथों से। हमारे अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करता हूँ तो हमारे इंजीनियर्स हैं ऐसे जो जी बिल्कुल, आप मतलब ये एक काफ़ी टेक्नोलॉजी का जो गैप है वो काफ़ी हमारे इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जो इस गैप को पूरा कर सकते हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनको हम अपने साथ रखते हैं और उनको हम इन वेंडर्स की प्रेमिसेस पे डिप्लॉय कर देते हैं और उनके साथ हमारे क्वालिटी के लोग भी साथ जाते हैं ताकि हम उनका लेवल और उनका वो जो प्रोडक्शन की वो है फैसिलिटी उसको इतना एनहांस करें कि वो एरोस्पेस ग्रेड की चीज़ों के काबिल हों और उसको आगे लेके चलें। सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी पे बहुत नजर जी बिल्कुल, सबसे पहले तो क्योंकि हम उनको ड्राइंग के साथ, क्योंकि वो क्वालिटी के लिए कि सबसे पहला काम है कि जो मटेरियल उनके पास आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसकी ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल है, हम उसको कैसे लेके ट्रेस करते हैं, फिर उसकी जो आगे फर्दर मशीनिंग है, प्रोसेसिंग है, उसको किस किस स्टेप पे हमने क्या क्या चेक्स करने हैं, उसको कैसे लेके चलना है। और हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें जितनी कम से कम होती जाए आहिस्ता आहिस्ता, उतना उनको फ़ायदा है कि हम आखिरी स्टेज पे, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि आखिरी स्टेज पे आके ही हम उनको चेक करें और बाकी सारी उन्होंने ट्रेसेबिलिटी की अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की हुई हो ताकि हम उसको आगे लेके चलें, क्योंकि एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स के साथ हमें एक स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है जिसके लिए जो कस्टमर या एंड यूज़र को जो चीज़ जाती है उसके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन जाती है, और जितनी ही इंपॉर्टेंट या ज़रूरी ये प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी वैलिडिटी और उसकी वेरिफिकेशन के लिए बहुत अहम है। तो हमारी यही जरूरत आपके पास सही साहब, जरूर साहब, आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के आप रुकन हैं। ओवरऑल अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए भी आइडियाज 2022 कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितने लर्निंग प्रोसेस होते हैं, और खासकर अगर जो इनका एक इंटेलिजेंस के हवाले से था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे भी कोई रिलेट करता है? जी बिल्कुल करता है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस पे पार्टिसिपेट किया आके आइडियाज़ में। ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें सबसे बड़े इवेंट्स में से ये कंसिडर होता है। ढेर सारी इंटरनेशनल फर्म्स आई हुई हैं
और हमने भी ये कोशिश की, इस स्टॉल में हमने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को लाके बिठाया जो पार्ट्स बना रहे हैं लोकल इंडस्ट्री के लिए। और इस एक्सपो में हमें बहुत ज़्यादा मौका मिला, मैं खुद पर्सनली गया, ढेर सारी इंटरनेशनल फर्म्स बैठी हुई हैं, मैं उनसे मीटिंग करके आया, उनको कार्ड्स दिए कि कोलैबोरेट करें, जिस किस्म का पार्ट आपको पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री से चाहिए आपको मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बहुत कैपेबिलिटी है सर। हमारी मुल्क से बनने वाले ऑटो पार्ट्स खास तौर पे 70 से ज़्यादा मुल्कों को एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है और बिलियंस की एक्सपोर्ट है सर, ये कोई छोटी एक्सपोर्ट नहीं है, वेरी बिग एक्सपोर्ट। इवन BMW, जैगुआर, इस तरह की गाड़ियों के पार्ट्स भी पाकिस्तान में बनते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं, यूरोप एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन वो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, वो ज़्यादातर सिविल गाड़ियों से रिलेटेड है। तो हमने इस आइडियाज़ का फ़ायदा उठा के उन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट के साथ भी लाने की कोशिश की और उन इंडस्ट्री को जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो डिफेंस से रिलेटेड काम कर रही हैं उसके भी करीब लाने की कोशिश की। इट वॉज अ मार्वलेस अपॉर्चुनिटी एंड वी टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट। बिल्कुल सही बात है। सईद साहब, जिस तरीके से आपने बात की कि यहाँ पे आपका एक तरीके से मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि एक मर्जर हो रहा है। पहली मर्तबा आपकी शिरकत हुई है, तो डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी कोई मर्जर हुआ? अगर मैं लोकल से हट के बात करूँ, इंटरनेशनल कंपनीज में ये कि हमारे ना एंड यूजर्स काफ़ी आए, मतलब मिडल ईस्ट की मार्केट है जिसको हमने फोकस किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और हमारी काफ़ी वहाँ कॉन्टैक्ट्स और इस्टेब्लिश हुए। काफ़ी डेलीगेट्स ने हमारे स्टॉल पे हमें विजिट किया। इनफैक्ट एक ये होता है कि पाकिस्तान को उस तरह करना कि इंश्योर करना कि उनको ये पता लगे कि ये वाकई कैपेबिलिटी है हम में ये डिलीवर करने की और बनाने की, तब वो आते हैं। और वो काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया हमारी काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, और इवन यहाँ तक है कि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि वो हमारे साथ जॉइंट वेंचर करके और उसकी जॉइंट डेवलपमेंट में वो हमारे साथ करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब उनको पता लगा है कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, तो वो काफ़ी वो था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम डिफरेंट सर, लेवल डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का लेवल डिफरेंट होता है। कोई कस्टमर, कोई एंड यूजर, पहला सवाल उनका ये होता है कि आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या ये डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी हमारी क्रेडिबिलिटी और वेपन की और प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी का बहुत फर्क पड़ता है उसमें। B2B ये आइडियाज 2022 करार दिया जाता है, तो बिजनेस टू बिजनेस कई सारे MOU यही इस कमरे से बाहर अगर हम चले जाते हैं तो यही साइन हो रहे हैं। तो वो जो जितने भी MOU जितनी कंपनीज के साथ सही साफ साइन होते हैं, आपका भी कोई रास्ता बना और ये मईशत के लिए कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है? मईशत के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना वो आप डुअल रोल हो रहा है कि अगर आप जितनी आप प्रोडक्शन या इस तरह की चीज़ें आप पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान कर लेंगे, तो इसका मतलब है वो सारी प्रोडक्ट या वो सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो इंपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है आपको डॉलर LCs खोलनी पड़ेंगी, वो डॉलर्स का होता है, वो आपका ज़र मुबादला वहाँ बचेगा। फिर जब यही चीज़ यहाँ से डेवलप होकर एक्सपोर्ट होगी तो ज़र मुबादला वापस आएगा और वो आपको इन टर्म्स ऑफ हार्ड कैश होगा, तो वो काफ़ी इफेक्ट आपका पड़ता है। और उससे ये होता है कि और एवेन्यूज़ खुलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ती है। तो ये मतलब सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर कर रही होती है। और इसमें ये हुआ कि जैसे सर कह रहे थे, हमने हमारी ये कोशिश थी कि एक तो एस्पेक्ट ये था कि हम एंड यूज़र को देख रहे थे, लेकिन हम लोकल वेंडर्स को भी तलाश कर रहे थे। कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग में कोई अच्छा वेंडर हमें नज़र आया या कोई मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग में कोई अच्छा वेंडर नज़र आया, तो हमने उनसे जाके ज़रूर 1-to-1 बातचीत की है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं। और ये हुआ है कि इससे ये हुआ है कि कम से कम एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। अब मैंने उन सबको यही कहा है कि मैं आज इंशाल्लाह वापसी होगी तो मंडे से हम ये कांटेक्ट हम पूरी एक शुरू करेंगे, हर बंदे के साथ बैठेंगे कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या वो इसको फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छा आइडियाज़ उस लिहाज से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ है कि हमें काफ़ी मतलब एंड यूज़र के अलावा लोकल वेंडर जो हमारी ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है उसके लिए भी हमें लोकल वेंडर्स यहाँ काफ़ी नज़र आए हैं, जिनमें वो पोटेंशियल अवेलेबल है कि वो एरोस्पेस ग्रेड की चीज़ें बना सकते हैं। सर कह रहे थे कि जैसे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट उतने ही स्ट्रिक्ट या वो हैं कि जितने हमें एरोस्पेस ग्रेड की चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं। तो वही वेंडर्स अगर वो काम कर रहे हैं तो हम उनको डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे कि वो इस तरफ आएँ और हमारे साथ कोलैबोरेशन करें ताकि हम ये काम कर सकें। बिल्कुल ठीक है जरूर साहब। आइडिया बहुत मिलते हैं बिजनेस के लिए आइडियाज में आने के बाद। तो जिस तरीके से अभी सईद साहब ने बात की कि कई सारे आइडियाज मिले, हालांकि क्या उनसे रिलेट कर सकता है जिनके बारे में पहले पता भी नहीं था, अब वो लोग कहाँ तक इनके लिए करामत साबित होंगे, वो मंडे से काम शुरू हो जाएगा। जैसे सईद साहब ने कहा कि 4 दिन खत्म और फिर काम शुरू हो गया, आप प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। आज थ्योरी या पेपर्स जितने से वो बंद हो गए। लेकिन सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है और वो ये है कि दुनिया जितनी कॉम्पिटिटिव हो गई है
उसमें रेट्स बहुत काउंट करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस बहुत काउंट करते हैं। अगर हम मोस्टली अपनी चीज़ें भिजवाते हैं ज़्यादातर तो हमारी अफ्रीकी ममालिक में जा रही होती है, मिडल ईस्ट में जा रही होती है, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस, ये बायर ही बिल्कुल डिफरेंट है, उनके रेट्स ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। चले हम इन्हीं ममालिक को दें, इनकी तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन क्या हम उस कंपटीशन को प्राइस वाइज मैनेज कर लेते हैं? मैं जो गवर्नमेंट अदारे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अपील की, और आपके तो वसत से फिर ये आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि आप हर दफ़ा जो $250 की चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में अगर आपको $50 में मिल जाती है और उसी क्वालिटी की मिलती है, तो आप एक्सपोर्ट की तरगीब तो बाद में दीजिएगा, इंपोर्ट के ऊपर तो इस चीज़ को इंश्योर कर लेना कि एक चीज़ लोकल बन सकती है और वो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड भी पूरे कर रही है, तो फिर आप इंपोर्ट क्यों करते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है। तो बंद की हुई है मेरे ख्याल नहीं से, सर, आप नहीं, लोगों की कोई बात ऐसी होगी। चीज़ नहीं है। अच्छा, हम इंपोर्ट में लगातार लगे हुए हैं सर, हम हर चीज़ की इंपोर्ट में लगे हुए हैं। जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे भी यही हालात है, जो OEMs है वो भी यही करते हैं सर। गवर्नमेंट अदारे भी सर मैक्सिमम इंपोर्ट पे चल रहे हैं सर हमारे, और हमारा सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि जो बाहर की आई हुई चीज़ होती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जो पाकिस्तान कराची में बनी है या लाहौर में बनी है, वो अच्छी नहीं लगती। मैंने कुछ ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं। मैं कहा जी कराची लांडी एरिया में बैठ के हमारा एक लोकल मैन्युफैक्चरर बोइंग के इंजन के पार्ट्स बना रहे हैं, और वो सिंगल सोर्स है पिछले 10 साल से दुनिया में, उसके अलावा वो कोई पार्ट नहीं दे पा रहा उस प्राइस और उस क्वालिटी में। R&D हमारी एक कंपनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 10 साल से दे रहा है। कराची में ही है? कराची में लांडी एरिया में बैठे हुए हैं सर, और वो बना के बोइंग को दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पार्ट नहीं ले रही। और बहुत से ऐसे पार्ट है जो पाकिस्तान से भर के जर्मनी जाते हैं, उनके ऊपर मेड इन जर्मनी लिखा जाता है, फिर हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से वो पार्ट इंपोर्ट करती है, बनते वो पाकिस्तान में, जिस तरह हमारे कपड़े बन के जाते हैं और बाहर से होके आते हैं। सपोर्ट नहीं किया जा रहा पाकिस्तान बिजनेस सर मैं ये समझता हूँ, जो इंपोर्ट को बढ़ा सके। मैं ये तो नहीं कहूंगा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मैं ये तो नहीं कहूंगा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हमारे गवर्नमेंट के अदारों में जो सीनियर अफसरान बैठे हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि लोकल वेंडर से अगर पार्ट बन जाए उसको इम्पोर्ट ना होने दें। ये कहने के हद तक बहुत अच्छी बातें हैं, हर कोई अच्छी बातें करता है, लेकिन जब इम्पोर्ट आप देखेंगे, आप दोनों डाटा को टैली कर लें। हमारी लोकल जो बनी हुई चीज़ है वो बहुत छोटी क्वांटिटी, हम समझते हैं ये बन नहीं सकती पाकिस्तान में, तो बस थोड़ा सा यही बनेगा। एक्चुअली बहुत कुछ बन सकता है, हमें एक दफ़ा मौका देना है लोकल वेंडर्स को। हम कहते हैं हमारे लोकल वेंडर को एक्सपोर्ट में जाना चाहिए। सबसे पहले आप खुद तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें, उसके बाद आप एक्सपोर्ट में ले जाइएगा ना। आप खुद जो पार्ट बाहर से ले रहे हैं वो तो लोकल इंडस्ट्री से लेना शुरू करें। आपकी क्वालिटी मीट ना करे आप मत लें। मैं लोकल इंडस्ट्री के लिए क्यों बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से मैं क्यों बात ये बार बार करता हूँ कि हमारी जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं ये सब कुछ कर सकती हैं। आप पार्ट दें, आपकी क्वालिटी का नहीं होता आप मत लें, अगर बन जाता है तो फिर तो इम्पोर्ट ना करें ना। उसके बावजूद भी अगर हम इम्पोर्ट में लगे रहेंगे तो हमारे हालात श्रीलंका से बहुत बुरे होने जा रहे हैं सर, हालात अच्छे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जहूर साहब ने, पैगाम आ गया जहूर साहब का। सईद साहब आपका भी पैगाम इस सिलसिले में मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने अपने लोगों को मजबूत नहीं किया, अपनी इंडस्ट्री को मजबूत नहीं किया, तो फिर बुरे हालात आने वाले हैं। और अगर हम अब भी उन्हीं को सपोर्ट करते रहेंगे। एक पैगाम आपका भी, आपका कैमरा है। बिल्कुल, उसमें मैं जहूर साहब की बात को मैं ऐड ये कर लूँ कि मतलब एरोस्पेस इंडस्ट्री में पार्ट के अलावा उसकी ना लाइफ साइकिल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो जो आप इंटरनेशनल बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़, उसकी फिर वो जो वेंडर है इंटरनेशनल वेंडर, उसकी लाइफ साइकिल सपोर्ट के भी आपसे इतने पैसे चार्ज करता है कि वो इक्विपमेंट से ज़्यादा उसके पैसे बन जाते हैं। तो अगर आपका लोकल वेंडर वो काम कर रहा है तो वो आपको बहुत कम उसमें उसकी सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो उसकी एक्सपर्टीज़ मौजूद होती है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि जिसको आपको देखना चाहिए कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो हो सकता है। और हम यही चाह रहे हैं कि हमारी शुरू से ही यही है कि हम लोकल इंडस्ट्री को और लोकल वेंडर को प्रमोट करें, क्योंकि जितना वो प्रमोट होंगे और जितना वो अच्छा काम करेंगे उतना ही हमारी सोर्सिंग बेहतर होगी, हमें चीज़ अच्छी मिलेगी और हम उसको आगे अपने ही लोग भरोसा नहीं कर रहे। मकसद है हमारी गवर्नमेंट अगर भरोसा नहीं करती है अपने वेंडर्स में, ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क। सर हमारी फिलॉसफी तो काफ़ी अर्से से ये है कि हम लोकल वेंडर्स को साथ लेके चल रहे हैं। मतलब हमारा जो शुरू से सेटअप था वो एक टोटली लोकल मतलब फोकस्ड R&D सेटअप था। अब हम उसको प्रोडक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो भी उस सिलसिले में कि हम उसकी इंटीग्रेशन सिर्फ करेंगे। हमने जब भी सीरियल प्रोडक्शन की तरफ गए हैं किसी भी पार्ट के लिए, तो हमने लोकल वेंडर्स और लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल हमने टारगेट किया है और उनको टारगेट करके फोकस करके हमारे लाहौर में भी वेंडर्स हैं, पेशावर में हमारे वेंडर्स बैठे हुए हैं, कराची में भी हम ये काम इन लोगों वेंडर्स से करवा रहे हैं। तो अब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमने कॉन्टैक्ट्स और बढ़ाने हैं। ये आइडियाज़ जैसे आइडियाज़ का हुआ है
है। मुझे काफ़ी कॉन्टेक्ट्स ऐसे मिले हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके और हम इसको आगे लेके चल सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सईदुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर जहूर सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइडियाज़ के इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट होते हैं और ज़ाहिर है ये तमाम के तमाम बड़े स्टेक होल्डर हैं जो मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन इनके मसाइल भी सबके सामने हैं कि अगर लोकल इंडस्ट्री को लोकल वेंडर्स को सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये एक हद तक कर सकते हैं, एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन उनका उनका जितना मटेरियल है वो बल्क में अगर कोई ले सकता है तो वो सरकार ले सकती है जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसी सूरत में वो वेंडर्स मजबूत होंगे तो ये लोग भी मजबूत हो रहे होंगे जितनी इंडस्ट्रीज है एट द सेम टाइम। तो फिर पहला पत्थर तो सरकार को ही फेंकना पड़ेगा। ये आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से अक्सर ये आइडिया जनरेट होता आ रहा है। नसीम राजपूत यहाँ से इजाज़त चाह रहे हैं, आज आखिरी दिन है। अगर मजीद कोई प्रोग्राम होगा तो आपके साथ मुलाकात करें। टिल देन अल्लाह ने के बाद। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम इवेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान की जो अचीवमेंट्स हैं डिफेंस प्रोडक्शन में उसको भी शोकेस करता है और मुख्तलिफ ममालिक को पता चलता है कि पाकिस्तान ने इस दिफाई पैदावार में कितनी तरक्की की है और सबको साथ जमा भी करता है। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो एलाइज हैं और जो ममालिक हैं पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहते हैं, तो इससे पाकिस्तान का अच्छा इमेज भी उजागर करता है और कौम में भी हिम्मत मिलती है कि हम खुद कफील हैं और अपने दिफा को हम खुद कर सकते हैं, ना कि हमारा इन्हिसार कोई बाहर के मुल्क पर है। इस खित्ते का इमेज बड़ा ख़राब है, जंग, लड़ाई, तसादम, और हिंदुस्तान का इमेज जो है जहरियत का है। हमारा इमेज है अमन का, हमारा इमेज है लोगों को जोड़ने का, हमारा इमेज है बाहमी ताउन को बढ़ाने का, और ताउन का एक तरीका जो है वो डिफेंस एक्सपर्ट्स को बुलाना है। तो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छे मुस्बत नताइज होंगे पाकिस्तान के लिए भी और इस खित्ते के लिए। फरिश्तों को शिकायत है कि या रब बशरे गुमराह कम कोशिश भी है, नया इंसान कोई तख्लीक कर तो ये जाहिल भी है, बारे दोष भी है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बुरा समझूं है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। बुरा समझूं है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। It's 12 p.m. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. This is Faisal Hussain from JB Industries, and we are representing our JB Industries as a manufacturer and exporter to US and Europe, and covering most of the brands which namely like Everlast and many retail brands, and we are also in promotional stuff, uniform business, and I'm working here as a manager merchandise and marketing. Or we are here and we are very pleased to come over here, and बहुत एक नेक्स्ट लेवल की एक हमें यहाँ पे एक्सपोजर मिल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी कंट्री इस तरह से एक नेक्स्ट लेवल पे जाए और हमारे प्रोडक्ट को लोग एक्सप्लोर करें ओवर several stages. Badar Expo has done also very good out of their efforts. So keep it up. Thank you very much.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अर्रहमान, वो जो निहायत मेहरबान है। अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, तालीम फरमाई उसी ने कुरान की, पैदा किया उसी ने इंसान को। अल्लमहुल बयान, सिखाया उसी ने, बोलना उसको। अश्शम्सु वल क़मरु बिउस्बान, सूरज और चांद पाबंद है एक हिसाब के। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, और झाड़ियां और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान अदल। अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, ताकि ना तजावुज करो हद से निज़ाम मीज़ान में। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ और मत कम करो तोलते वक्त। वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, और ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होते हैं। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, पैदा किया उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मट्टी से। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और पैदा किया उसने जिन्नात को शोले से आग के। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, रब दोनों मशरिकों और रब दोनों मगरिबों का। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, रवा किए उसने दो दरिया जो आपस में मिलते हैं। बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, दोनों में है एक आड़, नहीं करते तजावुज। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, निकलते हैं इन दोनों में से मोती और मूंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल अअलाम, और उसी के हैं जहाज भी जो ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में पहाड़ों की तरह। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम, जो कुछ है इस जमीन पर उसको फना होना है और बाकी रहेगी जात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। यसअलुहु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़
كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان। मांगता है उसी से जो कोई है आसमानों में और ज़मीन में, हर रोज़ वो किसी काम में होता है, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। सनफ़ुरुगु लकुम अय्युहा थक़लान। अनकरीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ, ए दो बोझल जमातों, जिन और इंसान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। या मअशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फन्फुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए गुरोहों, जिनों और इंसानों को, अगर तुम्हें कुदरत हो के निकल जाओ तुम किनारों से आसमान और ज़मीन के, तो निकल जाओ, नहीं निकल सकते तुम सिवाय ज़ोर के। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान। छोड़ दिए जाएंगे तुम पर शोले आग के और धुआं, तो फिर ना कर सकोगे तुम उनका मुकाबला। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़इज़ा शक़्क़तिस समाउ फ़कानत वरदतन कद्दिहान। फिर जब फट जाएगा आसमान तो हो जाएगा वो गुलाबी तेल की तलछीट की तरह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़ंबिही इंसुन वला जान। तो उस रोज़ ना पूछा जाएगा उसके गुनाहों के बारे में किसी इंसान से और ना किसी जिन से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों से, फिर पकड़े जाएंगे पेशानी के बालों और पाँवों से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। हाज़िही जहन्नमु अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। यही है वो जहन्नुम झुटलाया करते थे जिसे मुजरिम लोग। यतूफ़ून बैनहा व बैन हमीमिन आन। घूमते फिरेंगे वो दरमियान में उस दोज़ख के और खौलते हुए गर्म पानी के। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और जो डरा खड़े होने से अपने रब के सामने, उसके लिए दो जन्नतें हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत सी शाखों वाले दरख्त, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा ऐनान तजरियान। इनमें दो चश्मे बह रहे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान
اثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان इनमें हर तरह के फल दो किस्म के होंगे, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان। तकिया लगाए हुए होंगे ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर रेशम के हैं, और फल दोनों बागों के नजदीक झुक रहे होंगे। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان। होंगी उनमें शर्मीली निगाहों वालियां, ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। كأنهن الياقوت والمرجان। गोया वो हैं याकूत और मरजान। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। هل جزاء الإحسان إلا الإحسان। नहीं है जजा उम्दा नेकी की मगर ये बदला है आला दर्जे का। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان। और इन दोनों के अलावा दो जन्नतें और हैं, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان। दोनों गहरी सब्ज रंग की शादाब, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فيهما عينان نضاختان। उन दोनों में हैं दो चश्मे उबलते हुए। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فيهما فاكهة ونخل ورمان। इन दोनों में हैं फल और खजूरें और अनार। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। فيهن خيرات حسان। इनमें होंगी नेक सीरत खूबसूरत औरतें। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। حور مقصورات في الخيام। वो हूरें जो महफूज हैं खैमों में। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان। ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان। तकिए लगाए बैठे होंगे मसनदों पर सब्ज रंग के और खूबसूरत नफीस। فبأي آلاء ربكما تكذبان। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे। تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام। बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब अजमत है और एहसान करने वाला है। صدق الله العظيم।
बहुत खुशी है कि आइडियाज़ 2022 एक मरतबा फिर कराची में हो रहा है। इससे पहले कोई 11 के करीब हुए थे, लेकिन मेरा ख्याल है आज जितनी इसकी ज़रूरत थी इससे पहले कभी भी नहीं रही। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह है कि इस तरह की कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन होती है तो उससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होता है। जो पाकिस्तान का जनरली इमेज बाहर रहा और ख़ास तौर पे पिछले चंद सालों में, तो इस तरह की एग्जीबिशन हमेशा उस चीज़ को निगेट करती है कि पाकिस्तान को जो बहुत से एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, सच एन एग्जीबिशन विल डेमोन्स्ट्रेट कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री। देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेनी कंट्रीज, बहुत से मुल्कों में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब कोई इंटरनेशनल डेलीगेशंस आते हैं, बाहर के आर्मी चीफ्स आते हैं, बाहर के हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, तो फिर ये साबित करता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का ख़ास तौर पे माशी हब कराची, जिसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सा ख़राब इमेज बनाया है, इस तरह की एग्जीबिशन उस इमेज को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होती हैं। और आई विश आइडियाज़ 2002 बेस्ट ऑफ लक। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कामिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और क़यामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वो खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ दुनिया टीवी कराची। 11वीं आइडियाज़ के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया है कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज़ायद ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडियाज़ से हम यहाँ तक पहुँचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं और ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयारा है JF Thunder 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी का इज़हार किया। माजी में अगर हम बात करें कि हमारा अल-ज़रार टैंक, बहुत से मुल्क उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज की ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजा थी हमारे लिए कि पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर हम बात करें वो इंतहाई शानदार रही और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, मजीद कामयाब होगी और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। Honorable Defence Minister, Badar Muhammad Asif, Excellencies, distinguished guests, Assalamu alaikum and good afternoon. It is a matter of great honor for me to extend a very warm welcome to the Defence Minister, Federal State Ministers, Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, Flexi of senior serving and retired officers from armed forces, our guests from national media, business group and government parties. We are grateful to the Honorable Defence Minister for placing Ukraine
to formally launch International Defence Exhibition and Seminar 2022, better known by its acronym IDEAS. Ladies and gentlemen, we entered into the International Defence Exhibition industry by organizing the first IDEA in the year 2000 at Expo Center Karachi with 125 international exhibitors and 150 foreign delegates. During the last 2 decades, IDEA has grown steadily in space, volume, exhibitor and foreign delegates. In IDEA 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 231 delegates representing 44 countries. And we are lucky that General Ahmed is here, who was the DG then, and we had a record participation across the world. The opportunity to accelerate the IDEA got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID, which was one of the worst catastrophes of our living. World in general, and Pakistan in particular, fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I am glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15 to 18 November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite a gap of 4 years, we have received a booking for more than 70% of the available space till to date. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger in size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive response from the honorable invitees. IDEA has established itself as an attractive and grand venue to promote mutual understanding, trust, friendship and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it presents Pakistan's large defense industry to the outside world by showcasing Pakistan's defense production capability in the conventional realm, aimed at exploring ways and means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it aimed at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprises with their regional and global partners, while on the other hand, it is meant to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friends from friendly countries to visit Pakistan, sit together, interact with each other, collaborate, cooperate to build defense ties and find solutions to the problem confronting the region and the world. I wish to make a special mention of Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEAS 2022. I would also like to thank Ministry of Communication and Director General of Pakistan Post for according approval for issuance of commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying the holding of 11th edition of IDEA in 75th year of celebration of independence of Pakistan. May I also mention that the Government of Sindh and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of holding this mega event in Karachi. I would also like to thank Badar Expo Solution, our event organizer, for his untiring efforts and wholehearted support. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad. IDEAS 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of IDEAS will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
very well organized event. Thank you to all the organizers. My name is Salim Jan Mohammed from Kenya. We import hospitality items from Pakistan. Very organized event and a very interesting one as well. The only plea I would make to the Pakistan government is to try and encourage Pakistani textiles into East Africa. The difficulty we're having is the challenge of much lower duties from the COMESA countries like Egypt, where bed linen is 50% for Pakistani product and 5% for Egyptian goods. Even though Pakistan imports so much of tea from Kenya, their duty rates into Kenya are far more than other countries. So please, if you can do something about this. Thank you very much. Bye-bye. देखिए, जब ये कंसीव हुआ था आइडिया कि भी आइडियाज़ करना है, तो उस वक़्त मकसद यही था कि जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर किया जाए और उसी को लेके जितनी भी एफ़र्ट्स हुई, जितना भी हमने लोगोस बनाए लाइक आर्म्स फॉर पीस और पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है इन public sector and private sector both for the defense equipment and defense industry, वो हाईलाइट नहीं हो रहा था जैसे होना चाहिए था। तो जब से आइडियाज़ आया है तो हमने अपने शोकेस करना शुरू किया है प्रोडक्ट्स को, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेपो। तो उससे एक बड़ी पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का गया है और लोगों को पता चला है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, ऐसी पावर है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें बना रहा है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी डिमांड है। डिफेंस सेक्टर को तो सपोर्ट करता ही करता है, मगर जो आइडियाज़ है ये ओवरऑल आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। टूरिज़्म भी इससे बढ़ता है, लोग जो बाहर से बहुत सारे डेलीगेशन आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं इसको अटेंड करने के लिए बाहर से, वो पाकिस्तान को देखते हैं। वो पाकिस्तान को देखने के बाद उनको अंदाज़ा होता है कि ये बड़ा पीसफुल और अच्छा कंट्री है, खाने अच्छे हैं, लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ डेवलपमेंट अच्छी हुई है। तो अदरवाइज़ जो उनके कॉन्सेप्ट होता है, पता नहीं जब वो ख़बरों में देखते हैं तो कोई गार के ज़माने में चले गए हैं, मगर जब यहाँ आते हैं नाइस रोड्स बनी हुई हैं, नाइस बिल्डिंग्स हैं, ईटरीज अच्छी हैं, इसके अलावा मॉल्स हैं, तो उन्हें पता चलता है यार ये तो इस वन ऑफ द मॉडर्न कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो वो फिर जाके अपना इमेज हमारा जो है वो पॉजिटिव इसी तरह लोगों को बताते हैं और मेरा ख्याल है कि इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली and positively towards the economy of Pakistan since the time ideas have started. And Badar Expo जो है वो और ideas जो हैं दोनों आप समझें कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि भाई ये इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने पाकिस्तान के इमेज को भी उजागर किया है और इस चीज़ को नहीं देखा कि इनका फ़ायदा या नुकसान क्या है, इन्होंने सिर्फ ये देखा है कि पाकिस्तान का इमेज कैसे बेहतर होगा, उसी हिसाब से फिर इन्होंने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया है। तो बदर एक्सपो का बहुत कंट्रीब्यूशन है टू हाईलाइट आइडियाज़, टू पुट आइडियाज़ ऑन अ वेरी हायर पेडेस्टल। अल्हम्दुलिल्लाह। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures, and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum. This is Amber Khan from Time Publishers Private Limited.
हम लोग डाटा बैंक मैनेजमेंट कंपनी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के A to Z तमाम बिजनेस सेक्टर्स को कवर करते हैं अपनी डायरेक्टरी में। और 3 वेज मीडिया है हमारा, एक प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है और ऑनलाइन। तो तीनों मीडिया में हम कवर करते हैं आपका डाटा भी और आपके एडवर्टाइजमेंट्स भी। तो आप अपनी अपडेशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, हमारा फॉर्म फिल करके हमें भेज सकते हैं। सेकेंड वन, आइडियाज़ के हवाले से मैं आपको बताऊं, 4 साल के बाद ये आइडियाज़ हुई है। लास्ट वाली कोरोना की वजह से स्किप की गई थी। तो इस दफ़ा लोगों का रश और एक्साइटमेंट ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग यहाँ पे मिले हैं, क्लाइंटल भी काफ़ी अच्छा मिला है हमें यहाँ पे इस बार, और लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा मिला था। और आइडियाज़ में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी प्रिंट मीडिया को, जो कि लोग कहते हैं आज के अब इसका वक्त जा रहा है, आइडियाज़ में हमें ये बात दोबारा से बताई जाती है कि नहीं, प्रिंट मीडिया ही अभी भी चाहिए हमें, क्योंकि तमाम जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उनको प्रिंट वर्जन ही अपना दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन वो लोग इतना यूज़ नहीं करते। तो हमारी हार्ड कॉपीज़ डायरेक्टरीज जो है वो उनके पास जारी होती है। बदर एक्सपो के साथ हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं एज अ मीडिया पार्टनर, और जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन ही सबसे ज़्यादा क्लोज़ करती है आपको, और बहुत अच्छी कम्युनिकेशंस हैं हमारी इनके साथ। और बदर एक्सपो के तमाम इवेंट्स की तरह आइडियाज़ भी एक बेहतरीन इवेंट रहा है इस बार। थैंक यू सो मच। Hello, my name is Elena. I'm from Russia. I am looking for suppliers which can provide my company with good fabrics and materials. I'm the first time in Pakistan, the first time in this fair, and I'm really surprised because of quality, because of capacities of Pakistani factories. It's really amazing, and I'm very happy. Thank you very much. The atmosphere is fantastic, and really a lot of very professional guys in textile, a lot of foreigners, everybody's very kind and everybody smiles, so that's so nice. The management is okay. I participate in many international fairs, and I think that's in Pakistan it's a good level now.
अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से एक्सपो सेंटर कराची से मुखातिब है। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट बचत एक्सपो 2024 आपके लिए सजाई गई है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस की जानिब से। उसमें JDC का बहुत बड़ा रोल, उनके साथ साथ गवर्नर सिंध, कराची शहर की इंतज़ामिया, इन सब ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मकसद यही था कि कराची के शहरियों को सस्ता सामान भी प्रोवाइड किया जा सके, एट द सेम टाइम कोई हल्ला गुल्ला कोई एक्टिविटी भी तो हो। तो देखें, आज मैं आपको स्टार्ट ही एक्टिविटी से लेता हूँ। इन बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ देखें आप, ये तमाम के तमाम बच्चे यहाँ पर जंपिंग जैक भी मौजूद है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के खिलौने भी आए हुए हैं जिसपे वो इंजॉय कर रहे हैं। टॉयज़ यहाँ पर कार्ड भी है बच्चों के लिए जिसको वो चलाते हैं और जाके भरपूर अंदाज से इंजॉय करते हैं। लेकिन जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ज़रा इधर आइएगा। यहाँ आप देखेंगे तो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ खाने पीने से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रही है, क्योंकि रमज़ान के दिन है, अफ्तार भी करनी है आपने, सहरी भी करनी है आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये तमाम के तमाम लोग आपको इस वक्त तकरीबन रात की पहर ऐसा हो रहा है कि सहरी का टाइम ही, और ये सब आपको सहरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब लोग इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर हम आएंगे तो आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स दिखाते हैं जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप खाने पीने की अशिया, स्नैक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ है। और तो और यहाँ पे जिन लोगों ने पान खाना है तो पान भी यहाँ पर मौजूद है। और तो छोड़े आप, हर चीज़ यहाँ पर रखी गई है। ये आप देख सकते हैं अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ आ रही है, विज़िट कर रही है, खाना पीना इन सब का चल रहा है। डिफरेंट खाने आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको आइसक्रीम भी अवेलेबल है, फ्रेंच फ्राइज़ भी अवेलेबल है। और अगर यहाँ से हम चलते हैं आगे तो ड्रिंक्स, हलीम और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पर मैसर आएंगी। अगर आप यहाँ पर आएंगे, लोग आपको यहाँ दिखाएंगे तो सारे लोग आपको खाते पीते हुए इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। एक बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ बचत एक्सपो का विज़िट भी किया और बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा वो उठा सकते थे, तो ये फ़ायदा आपके लिए भी। आप भी आएँ, कल आखिरी दिन है, यहाँ ज़रूर विज़िट करें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको हलीम भी अवेलेबल होगा और यहाँ आपको रोस्ट भी अवेलेबल है, मुख्तलिफ खाने आपको यहाँ मिल रहे हैं। हाँ जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? लोग आ रहे हैं, चल रहा है मामला? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काम सही है। मकसद है कि जिस मकसद से आए थे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, सही है। ये देखिए आप, ये गर्मा गर्म आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या बना रहे हैं भाई आप? ये क्या है, क्या वैसे? फ्राइड राइस है। ये फ्राइड राइस की तैयारी हो रही है यहाँ पे। लोगों को आप देख सकते हैं और डिफरेंट किस्म की चिकन यहाँ पे मौजूद है। फ्राइज़ के डिफरेंट ब्रांड यहाँ पर हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पे बंद कबाब भी आपको मिलेगा, गोलगप्पे, चाट, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको मैसर है। बारबेक्यू खाने का, अगर आपको रोल खाने का मूड है तो KF हॉट रोल भी यहाँ पर मौजूद है। सर, आप कैसा यहाँ पे आके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा एटमॉस्फेयर है और बेहतरीन सब माशाल्लाह। इवन फैमिली के साथ आना चाहिए। फैमिली के साथ। और खास तौर पे आपने कुछ खरीदारी की? खरीदारी मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, बस अब कुछ घर के जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुनासिब रेटों में मिली हैं। चलें, तो यानी कि खुश होके जा रहे हैं बचत एक्सपो से अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये सब लोग यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लोग खाते पीते हुए इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंदर भी चलते हैं, ज़रा वहाँ की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। टपाल भी यहाँ पर मौजूद है। इतना बड़ा ब्रांड है टपाल फैमिली मिक्सचर, और ये फैमिली गाला ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस जगह भी आप देखेंगे तो आपको फैमिलीज दिखाई देंगी। बचत एक्सपो 2024 का मकसद यही था कि अपनी लोगों को, फैमिलीज़ को हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना है। यहाँ आए तो फिर अंदाज़ आपको दिखाई देगा। अंदाज़ का ब्रांड खासा बड़ा ब्रांड, और
ये अंदाज है बचत एक्सपो का भी। हम अपना एक अंदाज है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का, और जितने भी लोग जेडीसी ऑनरेबल गवर्नर्स इन सब लोग यहाँ पर जुड़े, सबका एक अंदाज दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है, और हालांकि अब टाइम ऐसा हुआ है कि तकरीबन ख़त्म होने का टाइम है, तो कल आखिरी दिन है। पहुँचे हैं आप यहाँ पर एक्सपो से एक्सपोजर बचत एक्सपो 2024 सीज़न 3 के डे 2 से नसीम राजपूत आपसे चाहता है इजाज़त। आप ये कह कर के आप आएँ और आके इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अल्लाह निगहबान। Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. My name is Awais Nadeem. I am Regional Business Manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of Ideas 2022. Ideas जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में। इससे पहले 4 साल पहले हुआ था। It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं, या उससे रेलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं, हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं। फास्ट केबल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। फास्ट केबल इज़ द फर्स्ट एंड ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज़ CCV लाइन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा वी हैव एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट. We are the first Kima Gold certified here in Pakistan, and we also have launched the first Fast Tasdeeq, and we are the first one who launched their app in Pakistan, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर बैठे बाय कर सकते हैं. We also launched the Fast Tasdeeq कि आप जब भी फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. So we claim that Fast serves you with a real quality, and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 kV cables, and also we are manufacturing relay conductor, जो कि हमने एक import substitution की है, और हम उसके ज़रिए अपने national grids को और जितने हमारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसको एनर्जाइज कर रहे हैं. सो आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रेलेवेंट लोग हैं वो आइडियाज़ को ज़रूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का. थैंक यू. Assalamu alaikum. My name is Haider Mahbub Hussain, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022, and we are launching a defense magazine, which is Pakistan's first international defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions, which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much. दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल,
सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। It's 1 p.m. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर निदा है। मैं एज जेडीसी लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ। मेरे साथ वर्दा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं। हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हम लोगों की लैब जेडीसी फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे। और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे कि जफ़र भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम आदम कासिम है और मैं सीईओ हूँ इंडस्ट्री लिंक का। इंडस्ट्री लिंक हमारा एक नया वेंचर है, एक हमारी कंपनी है
और हमारा वेंचर एक अमेरिकन कंपनी के साथ है, वेस्टिंग हाउस। वेस्टिंग हाउस किसी भी इंट्रोडक्शन का आज नहीं है। वेस्टिंग हाउस सर्व कर रहा है फॉर मोर देन 100 years और इस वेस्टिंग हाउस की काफी बड़ी रेंज है एमपी एलपी के अंदर, डाटा ट्रांसफार्मर्स, बस ट्रेस, तो उसकी काफी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। हम IEEE में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और IEEE में हम वेस्टिंग हाउस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और IEEE मैं पर्सनली समझता हूँ बड़ा प्रोडक्टिव एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल वेंडर्स हमें आपस में नेटवर्किंग होती है। हम प्रीवियसली IEEE पे पार्टिसिपेट करते रहे हैं अपनी पुरानी कंपनी डाटा सोल्यूशन के साथ। इसका फीडबैक, इसका आउटकम बहुत आउट क्लास रहा है और मैं स्पेशली यहाँ पे बदर एक्सपो वालों को भी जरूर नाम दूंगा कि वो डे इन डे आउट काफी वर्किंग कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब जो है हमें विजिट करें। 10 सितंबर 12 सितंबर तक ये एग्जीबिशन होगी, तो हम वहाँ पे आपसे मिलना चाहते हैं, आपको वहाँ पे सर्व करना चाहते हैं और आपको अपनी साइड प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जफर अहमद सैयद है। मैं मैनेजर सेल्स और मार्केटिंग हूँ शान इंडस्ट्रीज के में। शान इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कोई आज से 30 साल पहले कॉन्ट्रैक्टिंग से, और आज माशाल्लाह जो है हमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी इंडस्ट्रियल
और कमर्शियल सेक्टर को हम सर्व कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के हवाले से। हमने इस 30 साल के सफ़र के अंदर जो है एयर डिवाइसेस से लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह AHU एयर हैंडलिंग यूनिट और एयर कूल्ड चिलर तक बना रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट, इक्विपमेंट की सप्लाई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम गामजन रहें। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम आपका कॉपरेट हमारे साथ रहेगा और उस कॉपरेशन में शान इंडस्ट्रीज वक्त के साथ और ग्रो करेगी और उसके अंदर जो है हम एक अच्छी सर्विसेज देने के मराइल में से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस। और बेसिकली ये जो आइडियाज़ एक्सपो है, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हो जो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स। और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपू को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा ख्याल है ये डेपू ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान में मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हम जो यहाँ पर आए हुए हैं वो बोंजो जूसेस की तरफ से आए हुए हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के जूसेस हैं जिसके अंदर हमारे पास पेट बॉटल में जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, हमारे पास नेक्टर जूसेस हैं, CSD है हमारे पास, कार्बोनेटेड जूस हैं, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है। जो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास जो पाकिस्तानी आजकल ब्रांड आपको पता है कि काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पास पाकिस्तानी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। फिर हमारे पास केचअप्स आ जाती हैं, टेट्रा जूसेस हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा है बदर एक्सपो का, जो लास्ट हमने एयर भी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था। और अभी जो ये यहाँ पर चल रहा है इस टाइम बहुत ज़बरदस्त है। बचत बाज़ार की वजह से ही हमने लगाया हुआ है और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो आए हैं लोग उनको हमने डिस्काउंट ही देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं वो लगभग अप टू 40% है, 30 to 40% का हमारा डिस्काउंट चल रहा है मार्केट प्राइस से। तो थैंक यू बदर एक्सपो।
पूरे मुल्क से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर हैं ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से आए, तो कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर के आया हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी उतारी है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखे ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आएँ ख़रीदारी करने के लिए। और ये जो फ़ीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतज़ामात आपके लिए जो किए गए खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया सब कुछ। जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया। उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटी इसका मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजामात बहुत ज़बरदस्त हैं। नेक मोहम्मद भाई थैंक यू वेरी मच और गुड लक, अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं, पान के केबिन खुल चुके हैं हर जगह पे। आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से आए हैं आप? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से, तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ आपने कनकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से। कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह खुश, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बस मज़ा आ रहा है, हर साल होने 16-17 साल हो रहे आ रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं? तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए, सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? सारे इधर ऐसा तगड़े ने, वो सारे तोड़ आगे अपने जानवर। अच्छा, सारे भी आपके? आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है, मुतमईन है आप? सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पानी पुनी सारा दे के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके ताउन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई ये सानू परेशानी नहीं किसी काम की है। अज सानू 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी ये हर साल ही आने किसी साल भी ना परेशानी नहीं आने दी। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे, ये खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा, हाँ जी, 1 साल के बच्चे? हाँ, ये 10 महीने दे 11 महीने दे अगले साल वास्ते पढ़ाई वास्ते आते हैं। क्या आपने तैयार किए हैं यार? 10 महीने में क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं अगे, देखो अगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाबी जवान आ, कोई कराची वाले नहीं, पंजाबी पूरी मंडी पंजाब दे देखोगा सेरा बनया विच। ये जरा देखें अंदाज, जरा दिखाएं तो सही ना यार, ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे। आप जानवर देख सकते हैं किस। आइए आइए जरा तो इधर आ जाएं, आप मेरे साथ इधर आए ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे हम भी पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। पूरी मंडी में घूमे ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं 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 नहीं, ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल, कौन सी है ये? साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस? जी जी भाई, ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ एक ही है, कुछ बछड़ा देखो आपको पसंद लगा? अरे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मज़ा आया और हम लोगों को भी बता रहे हैं। पंजाब के शेर आपने देखे कि वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने, जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। आप ही शेर ने देखा? पंजाब के शेर, दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह
खुश हैं, मुतमईन हैं, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी वीआईपी हैं, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही। बिल्कुल, असल चीज़ है कि ये तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ास मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा, पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है, छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें वीवीआईपी ब्लॉक भी है, वीआईपी ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना कारोबार करने के लिए पहुँचे, तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें वीवीआईपी भी है, वीआईपी भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी है। और इसके 2-2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनको व्यापारियों को यहाँ पे फराम की गई है कि आएँ और आके आप बिज़नेस करें, और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फ़ीस फ़ी गाय और फ़ी ऊँट 4250 रुपये है, जबकि फ़ी बकरा और फ़ी बकरी कीमत 2000 रुपये रखी गई है। तो फिर एक मुनासिब कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने जानवर लेके आते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स, खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं, बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए बहुत सारे इक़दामात यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। जो मसाइल पहले रहे हैं उन मसाइल को दूर किया जाए, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, लोगों से भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ और आके अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। नसीम राजपूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आ जाएँ, आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं, और आएँ और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह ने के बाद।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम वसीम उमर है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो की तरफ से हमने स्टॉल लगाया है पराठों का, और मार्केट रेट से हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मार्केट में 180 रुपये का है और यहाँ पे हम 150 रुपये का दे रहे हैं। एक पैकेट में 6 पराठे होते हैं और ये 3 महीने तक फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनके साथ हमारा जो ना अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर ट्राई करेंगे तो हमारा पराठा बहुत अच्छा है। ये इस वक्त कराची के अंदर चल रहा है, जो कि लोग ज़्यादातर शहरी में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो ऑफिसेस वगैरह के जो लोग होते हैं, जो सुबह में उनको जल्दी होती है नाश्ते की, जो जाके लाइनों में नहीं खड़े होते होटलों पे, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पराठा इस्तेमाल करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है पूरे कराची के अंदर ये बड़ी बड़ी बेकरीज़ और मिल्क शॉप पर दस्तयाब है। और बदर एक्सपो का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने रमज़ान के मुबारक महीने में ये इतना बड़ा जो ना स्टॉल लगवाया। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों के इधर कीमत भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मार्केट से। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है बदर एक्सपो इंशाल्लाह हर साल हर महीने इसी तरीके से बचत बाज़ार लगाते रहेंगे। Federal Minister for Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Sindh, the Chairman, Joint Chiefs of Staff, Services Chiefs, Director General, Defence Export Promotion Organisation, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organisations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as IDEAS 2022. I am very pleased to see the presence of a large number of guests, including honourable delegates, exhibitors, and trade visitors who travelled from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strategic relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, our unity government formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world and has caused
economic difficulties for citizens everywhere, in addition to the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict. The risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision-making. This was effectively a collective shooting oneself in the foot. And it is something that we must all agree should never happen again in the course of our governments come and go, political parties change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, for the restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we can convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction and rehabilitation, we hope to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the Global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have
Alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77 chair, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we in Pakistan experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of the countries. With rapid advancement of technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct the business of the state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent my constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to be present in Parliament, and rather than lashing it out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our consistent state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting
various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations at the bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is, in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris, is central to establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments in human capital and professional development in the demand-driven industry. The unity government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Production's formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about the defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Production, Defense Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to exhibit the best of Pakistan's defense sector and promoting international cooperation in the field of defense production. I applaud the continuous
support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, and the government of Sindh for the successful conduct of this mega event. I am also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अभी तक तो बचत बाज़ार अच्छा जा रहा है। बदर एक्सपो की तरफ से जो लगा है, लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे तो यहाँ काफ़ी अच्छा था और इस साल भी काफ़ी अच्छा है रिस्पांस। पब्लिक का फुटफॉल थोड़ा सा मेरे ख्याल से और होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इधर काम करने के लिए बैठे हुए हैं और बचत बाज़ार जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो बचत के अंदर लोगों को अच्छी खासी हम लोग बचत दे रहे हैं। जैसे ये आलू है, तो बाहर मार्केट के अंदर आलू 3 किलो का आलू का बैग, आपको अगर 3 किलो आप आलू लेते हैं तो आपको बाहर से मिलता है 220 रुपये तक का ऑन एवरेज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग आपको दे रहे हैं 150 रुपये का 3 kg। जैसे ये प्याज आ गई, अब ये प्याज है, ये प्याज अच्छी प्याज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की एक्सपोर्ट की प्याज है, सेम एज़ आलू। तो प्याज आपको हम लोग दे रहे हैं 500 रुपये की यहाँ पे 3 kg, और बाहर आपको भी रेट पता है और मुझे भी रेट पता है कि 600 से कम रुपए के अंदर आपको 3 kg प्याज नहीं मिलनी। सेम एज अगर हम लोग टमाटर देख लें तो टमाटर के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छा टमाटर पड़ा हुआ है, और अगर आप टमाटर का देख सकें तो टमाटर सारा बड़ा टमाटर है और सारा लाल और अच्छा टमाटर है। यही हम लोग 60 रुपीज़ के पर kg हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, और बाहर आपको 70 रुपीज़ का बाहर टमाटर पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा तो बचत ईद से पहले ईद आ चुकी है, तो आई बी लाइक मैं बहुत खुश हूँगा कि आप लोग आएँ और इस चीज़ को अवेल करें। बाकी थैंक यू सो मच बदर एक्सपो, एंड थैंक यू सो मच बचत बाज़ार, एंड थैंक यू सो मच कराची। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं बेरिया फार्मेसी बेरिया फाउंडेशन पाकिस्तान नेवी से मेरा ताल्लुक़ है। हमने एग्जीबिशन में जो है अपना स्टॉल ये लगाया है अवेयरनेस के लिए, मेडिसन की अवेयरनेस के लिए, कि जो हम आवाम को अवेयरनेस दें कि जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है जालियत व्याध लोग बनाते हैं, तो उससे अवेयरनेस भी दें कि आप लोग जो है मेडिसन, मल्टी नेशनल मेडिसन को देखें। और जो एक्सपो है ये आवाम के लिए बड़ा अवेयरनेस रखता है,
और इसमें है कि आवाम को जो है हमारी आवाम को अपनी हेल्थ के बारे में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये बदर एक्सपो इन्होंने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया है लोगों के लिए, आवाम के लिए, और यहाँ की जो सर्विसेज है बहुत अच्छी हैं। और बेरिया फाउंडेशन का यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आवाम है इन्हें मेडिसन डिस्काउंट पर भी मिले, और जो मेडिसन है वो जाली ना हो, और मेडिसन ओवरऑल जो है कंपनीज़ की हो। Merhabalar, Ergin Akyüz, Trabzon Silah Sanayi Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapıyorum. Firmamız 1993 yılında Trabzon'da kuruldu. Entegre tam kapasite üretim tesisi, yarı otomatik tabanca üretimi yapıyoruz. Markamız Zigana. Firmamızda yarı otomatik silahlar Zig 14, 1911, Zig 1911, PX9 polimer silahımız mevcut. Bunun yanında kendi üretimimiz ve kendi dizaynımız olan Zigana serisi, Zigana Sport FK modellerimiz de mevcut. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनियल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से जब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। इसमें हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कन्फर्मेशंस आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बरे-आज़मों से हमारे पास डिग्नेटरीज़ आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सके। जिस वक्त भी इस तरह की कोई बिज़नेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज़ हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। जिस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज एक जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड टियर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा दैट विल बी द सेकंड डे ऑफ आइडियाज़। उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया हुआ, वो इनको सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनसे सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जिबिशन हॉल्स का एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास्ट में भी मिली है और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी दे वर हेल्ड एट CM हाउस। CM साहब वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद थे। उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली उनका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हुई। अस्सलामुअलैकुम। ये कुरैशी गारमेंट्स का स्टॉल है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। कुरैशी गारमेंट्स की तरफ से बचत एक्सपो में आप लोगों को बहुत ही मुनासिब प्राइस पर बेबी फ्रॉक्स वगैरह दी जा रही हैं। इसी तरीके से मेंस की टी-शर्ट्स हैं, रिजनेबल प्राइस हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। आप लोग आइए और ज़रूर इस धमाकेदार ऑफ़र से फ़ायदा उठाइए। अगर आप लोग चाहें तो आपको प्राइस का थोड़ा सा आगाह कर दें। ये 400 ईच है टी-शर्ट राउंड नेक की और 1500 की 4 दे रहे हैं। इसी तरीके से पोलो टी-शर्ट्स हैं वो 600 ईच है, 1000 की 2 दे रहे हैं। इसी तरीके से हर एक शर्ट्स पर टी-शर्ट्स पर कोई ना कोई ऑफ़र लगी हुई है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम समद आलम है और मैं ओसाका लाइटिंग का एम्प्लॉई हूँ और हमने यहाँ पे बचत एग्जीबिशन एक्सपो की 2nd एडिशन में यहाँ पे इंस्टॉल लगाया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है कस्टमर का।
इसके अलावा एक्सपो तो अच्छा लगा। पहला एडिशन जो था उसमें भी बहुत ज़्यादा पब्लिक आई थी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया था लोगों ने। लोगों के बचत के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था और हमारे भी काफ़ी पब्लिसिटी भी हुई थी, लोग भी काफ़ी ज़्यादा आए थे। और इसके अलावा बाहर मंडी भी इन लोगों ने लगाई है बचत वालों ने इस दफ़ा। ये भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मंडी भी लगी है इस दफ़ा, ताकि लोगों को कम से कम चीज़ में अच्छी चीज़ मिल सके। और यहाँ पे रिव्यू वगैरह तो सही है, बंदे हैं आ रहे हैं। और इसके अलावा हम यहाँ आते हैं लोगों को कम से कम में अच्छे से अच्छी चीज़ पहुँचाने के लिए ना, ताकि यहाँ पे बचत में कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट में मतलब हम लोगों को अपना ब्रांड यहाँ पे पहुँचा सकें, लोगों तक ये ब्रांड हम पहुँचा सकें कम से कम रेटों में और अच्छे से अच्छी चीज़ पहुँचा सकें जो नॉर्मल बंदा यूज़ कर सकता है। थोड़े से ज़्यादा रेट है जिनके मार्केटों में, वो यहाँ पे हम उसे 20%, 30%, 70% तक का हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बचत एग्जीबिशन के लिए। और इसके अलावा बदर वालों का भी शुक्रगुजार रहेंगे हम कि इतना अच्छा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं हर दफ़ा। सीज़न 1 में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, बचत वालों ने बड़ा सपोर्ट किया था हर जगह पे। कहीं भी कोई ऐसे अगर कोई इशू होता था तो फ़ौरन उसको सॉल्यूशन करते थे उसका जो भी है। It's 2 p.m. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to deliver presentations about development of 5G network-centric warfare, its component and challenges. Next slide, please. So I would divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introductions about the 5G itself, the KPI, the use cases, the standardization roadmap, and so on. And then from subtopic 2 until 4, they are about the military. What are the 5G key enablers that can be used for the military? How 5G can be very beneficial or can be used for the future battlefields. And the last but not least will be, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have one slide. We can see here that in 5G, basically there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left, no,
Previous slide, please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we cannot connect to the network. It is because a number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on will be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these three generic subcases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for Industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, and so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture is showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects, and then we can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it is quite difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all this performance, we have very big possibilities to use it in various type of use cases. For smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI or on also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages. Release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. Now is 2022, so the release 17 is already there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently, there are many studies saying that 5G also can be used in defense. This study from Allied Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach $70,000 million. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several key enablers. I don't know if you can read the slides because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. And then also SDN, software-defined network. The network will be defined using software, not hardware. And also network slicing, which is the set of parameters
can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI, and then cloud native, mobile edge computing, and of course millimeter wave. Next slide. So with all those key enablers, we can see that there are many studies, many research about using the 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT and then Fineable and so on and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. Okay. The first and the foremost is that it can be used for the military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, and then for distributed command and control in the battlefields. Even some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication. Tacticals means that in the battlefields, using millimeter wave so that we can use very high frequency, high directivity, and very low latencies. Also for the proximity service, PROSI, 5G for the AR, VR, augmented reality, and the virtual reality, also the mixed reality, and also for the geointelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next, the next one is about architecture. 5G is much more efficient than other G, than 4G, than 3G, of course. Okay, but if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 25 times. And the biggest contributions comes from the smaller cells. It is 1,600 times. So all these components is, if it is there, then it is very good. But in fact, not all of them are there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked to each other. Most of them are not open. Okay, and then in the 5G, there is so-called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, after 5G, beyond 5G, it is not just decoupling but also orchestrated using the AI. So this is the most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one, and then next one. Next. The next one is about the use of the IP version 6. Next one. So, as we can see that one of the things that have big impacts
on the security in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, it's cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has very big impacts for the security aspects. Next. Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use the cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G. But because of this variety of use cases, meaning that it also increasing the surface of for attacks. That's why this is very big concern to use this 5G for military. Next slide, please. And of course, the security standard is still ongoing. Now, next. The problem is this one. Okay. Even if the standard is there, okay, the standard is just the what we call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges. Technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next. That will be the last slide for my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बहुत ही बड़ा इवेंट के जिसमें अगर हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स की बात कर लें, इंटरनेशनल ममालिक की पार्टिसिपेशन की बात कर लें, तो शायद पाकिस्तान का कोई दूसरा इवेंट जो है वो इसको मैच भी नहीं कर पाता। ये हमारा ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और वहीं पर ही सारी दुनिया के लोग आके अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। और कई सारे ऐसे जॉइंट वेंचर माजी में हो चुके हैं और इस दफ़ा भी इसके इम्कान बहुत दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज़ वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज़ की बहुत बड़ी तादाद यहाँ अपना स्टॉल कायम कर चुकी है। आइडियाज़ 2022 जहाँ
आर्म फॉर पीस जो उनका स्लोगन दिखाई देता है, जहाँ स्लेन की बात हो रही है, वही एक खास टॉपिक इस आइडियाज 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस सिलसिले में एक प्रॉपर सेमिनार का इनेकाद भी किया गया और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को इससे आगाही दी गई। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं तो सारी दुनिया में ये खास सब्जेक्ट दिखाई देता है और सारी दुनिया इस पर एक खास फोकस करती हुई दिखाई देती है। मेरे साथ तीन हमारे मुल्क की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस वक्त ये किन किन चीज़ों में हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। इंतहाई अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, क्लाउड एंड मेटावर्स आर्किटेक्ट, CEO पैरा क्लाउड और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब। थैंक यू वेरी मच ज़िया साहब, बहुत थैंक यू। उनके साथ MNP के बिजनेस हेड है मूलर एंड फिप्स के, और इसके साथ साथ आप ज़बरदस्त किस्म की इस मामले में भी बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुजम्मिल अतर साहब। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब। जबकि उनके साथ बड़ी जिम्मेदारियां, अहम जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, आइडियाज़ के साथ भी जुड़े हुए हैं और जहां मुल्क में कोई मुश्किल आती है वहां पर ईसा लैब बहुत आगे दिखाई देती है। CEO ईसा लैब फरहान ईसा साहब। थैंक यू वेरी मच फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान भाई ज़रा शुरू करते हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब से। ज़िया साहब, सबसे पहले तो आम लोगों को, मुझे भी नहीं पता, तो मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, हम बिल्कुल आम लोग यहाँ बैठे हुए, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, नॉर्मली जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ना, जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें इंटेलिजेंस है, मगर वो बिल्कुल नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि उसको कि भाई आपकी एज अगर 65 से ऊपर है तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करें, इनको ब्लड ना लें इनसे। अच्छा, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जो आपकी एज पूछ के उसका जवाब देता है। मगर इसके बरखिलाफ तो ये नॉर्मल अभी जो हम अपनी ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं होते। मगर आप जो आम आदमी भी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने लगा है, आप फेसबुक पे जाते हैं, अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है कि तस्वीर में कौन कौन लोग खड़े हुए हैं आपके दोस्तों में, और उनको ऑटोमेटिकली टैग करता है। अच्छा, अब ये सिंपल सा प्रोग्राम नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है जो तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये ज़िया है। तो इस काम के लिए आपको नए किस्म के प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। तो जो पुराने किस्म के जो प्रोग्राम है, जो मोस्ट ऑफ द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं होती। मगर ये जो नए किस्म के प्रोग्राम है, इनमें एक्सटेंसिवली इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। नए प्रोग्राम क्या है? अच्छा, वो अब मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी के मैं अंदर नहीं जाना चाह रहा क्योंकि एक आम आदमी के लिए प्रोग्राम है। मगर लुबिला, आप ये देखिए, इस तरह समझे आप कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना, पहले तो ये होता था कि, और अभी यही होता है कि हम क्या करते हैं कि उसको ना ट्रेन करते हैं। ट्रेन से मतलब है कि हम क्या करते हैं, उसको ना, जैसे मेरी 10 तस्वीरें दिखाएंगे उसको। अच्छा, हम आम जिंदगी में मुझे आप कैसे पहचानेंगे? मुझे 2-4 दफा देखा होगा तो पहचानेंगे आप। अच्छा, कंप्यूटर भी अब इस तरह करने लगा है कि आपको लॉजिक खुद नहीं लिखनी पड़ती, वो आपने उसको कहा ये तस्वीर है, ये ज़िया है, ये तस्वीर है, ये ज़िया है। अच्छा, जब 10 दफा किया ना, तो वो ऐसे प्रोग्राम है जो उससे ये मतलब निकाल लेते हैं, कि अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये ज़िया है। तो फिर आइंदा कोई नई तस्वीर दिखाई जाए तो वो मुझे पहचान लेंगे कि ये भी ज़िया है। तो इस काम के लिए ये समझना जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यहाँ पहुंची है, आपको प्रोग्राम को ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप ट्रेन नहीं करेंगे, यानी डेटा चाहिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो जुड़ी हुई है साइंस, वो है डेटा साइंस। तो आपको, जैसे हमारे पास इसे लैब्स के वो बैठे हुए हैं, अगर अभी क्या होता था, ब्लड आया, ब्लड खुरबीन में वो देखता है डॉक्टर। आइंदा क्या होगा, और अभी भी हो रहा होगा, इनके पास भी हो रहा होगा, कि तस्वीर से डायग्नोज, उसको बहुत सारी तस्वीरें दिखाते हैं, मगर ट्रेन करना पड़ेगा, डेटा चाहिए होगा, और तस्वीरें दिखा के कि यार ये कैंसर है। फिर जब वो नया कैंसर सेल दिखेगा तो फौरन पहचान जाएगा कि ये कैंसर है, जो पहले इंसान कर सकते थे सिर्फ, अब मशीनें भी कर सकती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आप यूज़ करते हैं आम जिंदगी के अंदर, क्योंकि एक IT एक्सपर्ट इसको ज़्यादा और बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ, ज़ियाउल्लाह साहब खुद एक ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट है, लेकिन IT सेक्टर के थ्रू इस इंटेलिजेंस को किस तरीके से सामने लाया जा सकता है?
मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ज़िया साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, ये इनके साथ बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है, क्योंकि इनका जो तारुफ़ आपने कराया वो बहुत मुख्तसर तारुफ़ है। इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग के अंदर समझ लीजिए इनके साथ मेरा बैठना ऐसे ही है कि सूरज के सामने जो है आप चिराग रख दें, तो मैं तो इनके सामने ज़ाहिर है बहुत ही छोटी बात, नॉर्मल बात कर सकता हूँ। ये एक्सपर्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो इनिशिएटिव है पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर आईटी एक्सपर्ट्स को बनाने का, उसके अंदर सबसे बड़ा काम ये प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के साथ मिलकर कर रहे हैं इस वक्त। तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी, एक दो बहुत बड़ी शख्सियात के दरमियान में आपने मुझे बिठा दिया है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एक काम हमने शुरू किया है जिसके ऊपर इन्होंने तवज्जो दिलाई है। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा काम कर रही है, इसमें दो टाइप हैं, एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दो चीज़ों के अंदर जिस तरह ज़िया साहब ने बताया, शुरू के अंदर जो मामूली चीज़ें होती हैं वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं, और उसके बाद जो अब आप इसके अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं, जिस तरीके से एक आज की तारीख में जो गूगल असिस्टेंस या अगर आप बात कर लें एप्पल की, तो वो एआई के तौर के ऊपर सिरी को इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से जो स्मार्टफोन्स हैं उसके अंदर उसके साथ अलेक्सा इस्तेमाल होती है एंड्रॉयड के अंदर। तो ये डिफरेंट 3 टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो पावरफुल समझी जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके अंदर सिरी को समझा जाता है। गूगल सर्विसेज को बहरहाल सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है, उसके बाद सिरी, उसके बाद फिर जो है वो अलेक्सा को। इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के अंदर कहाँ पहुँच चुकी है। आपका फ़ोन आपको आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं इसकी चंद एक मिसालें बड़ी दिलचस्प आपके सामने रखूँगा। आप दिन में कितनी दफ़ा कौन कौन सी जगहों के ऊपर विज़िट करते हैं, इसका डेटा आपके फ़ोन के अंदर महफूज हो रहा है, आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ, आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ महफूज हो रहा है। उस जगह की फिर निशानदही, चूँकि उसके पास पहले किसी जगह प्रोग्राम में सेव होती है, तो वो निशानदही करता है कि आया ये जगह आपके काम की जगह है। वो जब टाइमिंग देखता है, सुबह आप 10 बजे या 9 बजे एक जगह दाखिल होते हैं और वहाँ से आप 6-7 बजे निकलते हैं, तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसकी वर्क प्लेस है। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर भी जो रोज़ाना जाने वाले लोग हैं, जब वो गूगल मैप्स के अंदर जाएंगे तो आप अगर देखेंगे तो उसके अंदर वर्क प्लेस आपकी आ रही होगी, आपने कभी ऐड नहीं किया उस वर्क प्लेस को। इसी तरीके से रात का टाइम चूँकि ज़्यादातर आप घर के अंदर गुजारते हैं, मैं सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि जो ज़्यादातर लोग हैं चूँकि वो शाम के बाद से लेकर सुबह तक का वक्त घर पर गुजारते हैं, इस वजह से वो उनकी होम की कैटेगरी के अंदर नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इसी तरीके से चूँकि सैटरडे संडे या संडे का दिन डेफिनेटली आप घर पर गुजारते हैं, तो वो आपके इसी तरीके से आप अगर एक ख़ास टाइम के अंदर घर से निकलते हैं और एक जगह जाते हैं, तो उसको डिटेक्ट करता है कि ये मस्जिद जा रहा है ये शख्स, तो आपके बारे में ये निशानदेही होती है कि आप मस्जिद जाने वाले हैं और दिन में कितनी दफ़ा, यानी आप 5 वक्त के नमाजी हैं, 2 वक्त के हैं, 1 वक्त के हैं, जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ते हैं आप, ईच एंड एवरीथिंग आपके मोबाइल के अंदर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद फिर आप जिन लोगों से मुलाकातें करते हैं, अच्छा आप एक शख्स है जो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, वो आप उससे मुलाकात करते हैं, आप हफ्ते में 1 दफ़ा मिलते हैं, 2 दफ़ा मिलते हैं, या महीने में 2 दफ़ा जाते हैं, उससे आपकी शख्सियत के बारे में गेज होता है कि आया आप एक खिलाड़ी से मिलने के लिए जाते हैं रेगुलर बुनियादों के ऊपर, आप एक इस्लामिक स्कॉलर से मिलने के लिए जाते हैं, आप एक डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं, और डॉक्टर फिर वो किस फील्ड का डॉक्टर है, बिकॉज वो सारा डेटा उस डॉक्टर का भी बैकएंड के ऊपर गूगल के ऊपर या सेफ है, तो वो उसको लिंकेजेस क्रिएट करता है। आज की तारीख के अंदर अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर जाएं, तो उनको सिर्फ इस बात की ज़रूरत होती है कि आपकी फेसबुक या आपकी गूगल की आईडी उनके पास मिल जाए, उसके बाद वो आपके बारे में मुकम्मल मालूमात
आपसे ज़्यादा बेहतर उनके पास आ जाती हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला करते हैं कि आइदर आपको वीज़ा देना चाहिए या आपको वीज़ा नहीं देना चाहिए, आप वाकई उनके मुल्क की ज़रूरत हैं या आपके उनके मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसकी बहुत ही आपको मामूली मिसाल दी है इसकी, जिस तरह ज़िया साहब फरमा रहे थे कि वो जो तस्वीर है उस तस्वीर को देख के अगर आप एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, अगर आपके पास आपके बच्चों की बचपन की तस्वीरें हैं तो उन तस्वीरों की बुनियाद के ऊपर वो साल ब साल हर साल की तस्वीरों को उन चेंजेस के साथ आपको दिखा सकता है और इसके लिए आपको कोई और प्रोग्राम फीड करने की जरूरत नहीं है। गूगल ऑलरेडी ये काम बैक एंड के ऊपर आपके कहे बगैर कर रहा होता है। तो आपकी तस्वीर की डिटेक्शन चेंजेस के साथ कि एक साल के बाद आपका अगर एक बच्चा है जिसका नाम लेट्स से राफिया है या राबिया है, वो उसको डिटेक्ट करता है कि बचपन में इसकी ये था, उसके बाद एक साल बाद ये हो गया, 2 साल के बाद ये हो गया और 15 साल के बाद वो इस कंडीशन के अंदर है, तो वो उस पूरी तस्वीरों की ट्रेल वो आपके सामने रख देता है। मेरी बात लंबी होगी लेकिन मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त आपकी जिंदगी के अंदर किस लेवल तक शामिल हो गई है। बिल्कुल सही बात है फरहान साहब, किसी के प्रॉब्लम हो जाए उसको टेस्ट कराने के लिए आपके पास आना पड़ता है। जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये तो आपके शोबे में भी बड़ी करामत साबित हो सकती है डाटा वगैरह के हवाले से, या अगर कौन से टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किस सीज़न में हो रहे हैं, तो ये तो इंटेलिजेंस आपके लिए भी बड़ी करामत हो सकती है। जी ये तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यूज़ करना शुरू कर दी है। ख़ास तौर पे रेडियोलॉजी के अंदर जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज़ हैं, उसकी हज़ारों, जिस तरह से सर ने कहा कि वो उनकी इमेजेस और उनके रिज़ल्ट्स वो फीड हुए और कंटिन्यूसली डाटा उनके को सिखाया जा रहा है। और अब जो है वो, बल्कि हमने भी एक स्टडी करी जिसके अंदर तकरीबन हमारे 45,000 इमेजेस थे और उसमें जब हमने देखा तो 45,000 इमेजेस फीड करने के बाद हमें पता ये चला कि 25 इमेजेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें पकड़ ली थी और ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट ने मिस कर दी थी। अच्छा, दूसरा ये हुआ है कि कोविड में डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो ये हमने स्क्रीनिंग के तौर पे यूज़ करना शुरू किया था कि जो नॉर्मल रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो स्क्रीन्ड हो जाएं और एबनॉर्मल वाली जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के पास आ जाए। इसी तरह से टेस्ट होते हैं, जैसे ख़ास तौर पे डेंगू आ रहा है और उसके साथ दूसरे टेस्ट भी हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन है, लिवर के हैं, तो इनका डाटा भी कंपाइल होकर रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जैसे इस दफ़ा जो डेंगू आया, हमने अनाउंस किया कि वो वैसे कहते हैं ना ब्लीडिंग हो जाएगी और दूसरे मसाइल होते हैं डेंगू में, लेकिन इस दफ़ा लिवर फेलियर के साइन सिम्टम्स आए, तो हम लोगों ने तो ईसा लैब ने ये शुरू कर दिया है। अच्छा, फिर हम लोग ना बायो सेफ्टी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कोविड ने जब आया था उसकी एपिडेमियोलॉजिकल के जैसे डेंगू जब इंडियन बॉर्डर्स पे आया था तो हम सर्वेलेंस कर रहे होते हैं और हमने कहा था ये कराची पाकिस्तान आ जाएगा, जो आ गया। फिर चिकनगुनिया एक और बीमारी बॉर्डरिंग टाउन्स पे आई, हमने पहले से बता दिया था कि उसका मच्छर भी यही है और यहाँ तक पहुँच गई है, ये आ जाएगी। और उसके बाद एनसीओसी के साथ मिलके भी हमने इसी के साथ मिलके काम किया और उसके आई थिंक कि मैं बहुत मुबारकबाद भी दूंगा इसे अच्छे इदारे को। एनसीओसी जो बना, जनरल हमूद उसको चेयर कर रहे थे और जनरल हुमायूं साहब कोर कमांडर कराची थे। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हुआ और आज वो आइडियाज़ के भी बानी है एक तरह से जो भी हो रहा है। जनरल हुमायूं का एक और चीज़ भी हुई कि जनरल हुमायूं साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट को, जो पहला, जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहला पाकिस्तान का कोविड सेंटर जो स्टैब्लिश्ड हुआ वो जनरल हुमायूं की वजह से हुआ जी। और जी अभी हैं वो, और मैंने कल भी उनको मुबारकबाद दी। और इधर का जो एक्सपो सेंटर स्टैब्लिश हुआ उसके 2-3 बड़े पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया को नज़र आए और पूरे पाकिस्तान को आए। पहले तो यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना कि जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स थे उनकी प्रोटेक्शन के बारे में काम हुआ। आपको बताऊं, ये वो रिकॉर्ड है, जनरल हुमायूं थे, जीओसी जनरल अकील थे और ब्रिगेडियर शहजाद होते थे 25 मैक के उस ज़माने में, इनकी, और फिर बाद में जनरल नदीम अंजुम भी थे। उसमें हुआ ये कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक सफाई वाला, जो रेड जोन जहाँ पे पेशेंट्स थे, मैं जो यहाँ पे हमारी ईसा लैब भी फ्री सर्विसेज दी पहले दिन से आखिरी दिन तक, एक शख्स को भी इधर जो काम कर रहा था, एक को कोविड नहीं हुआ।
और इससे पूरी दुनिया हिल गई जिसमें सारे ये मैकेनिज्म्स इस्तेमाल हुए। सेकंड चीज़ है डेथ रेट यहाँ पे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज़ ऐसी हुई कि यहाँ पे डेथ रेट ना होने के बराबर था, जबकि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर मरीज़ तो मरे ही मरे, ख़ासतौर पे इंडिया के अंदर पैथेटिक उनकी कंट्रोल्स थे, ज़ीरो। और उनको तो बल्कि पाकिस्तान से हेल्प लेनी चाहिए थी और उन्होंने, और सेकंड चीज़ ये हुई कि जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं और ये जो आइडियाज़ हैं, और आज हम भी यहाँ पे मौजूद हैं कि जो सिविलियंस और बिज़नेस कम्युनिटी, आर्म्स फॉर पीस और सब जो मिल के काम कर रहे हैं, आई थिंक कि ये इंडेवर्स जो हैं जो कोविड में नज़र आए और रिकॉर्ड्स बनाए पाकिस्तान ने, डेथ रेट हार्डली हो सकी, आई थिंक कि ये हर जगह पे होगी। और पाकिस्तान जिस तरह से अभी प्रोग्रेस कर रहा है और जितना हमारे आर्मी चीफ जिस तरह से चीज़ें गाइड कर रहे हैं, आई थिंक वी विल डू वंडर्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से उन्होंने पहले दिन सेमिनार में डाला, आपको मैं बताऊं, हम नॉट ओनली अ मेडिकल कम्युनिटी जो बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है, ये एक रियलिटी है। और इसमें जो ये इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम होना चाहिए। इसकी जो हाईलाइट आइडियाज़ ने किया, आई थिंक इसने एक तहलका मचा दिया। मुबारकबाद हो सारे ऑर्गेनाइजर्स को। एक ख़ास फोकस किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, समझ में आ गया कि भाई ये वाली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सेक्टर में। ये हम दिफाई नुमाइश में बैठे हुए, हमारा डिफेंस सेक्टर है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डिफेंस सेक्टर में कितनी करामद होती है? असल में हमें ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से हम कोई 10 साल दूर हैं। आप इमेजिन करें वो दुनिया जहाँ पे मुल्कों को अपनी फ़ौज ना उतारनी पड़े, रोबोट्स उतार दें। अब इमेजिन करें मुल्क अगर ये कर पाएँ कि एक भी उनकी कैजुअल्टी ना हो और सब रोबोट्स हों, तो ये दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। और जो इस मैदान में नहीं होगा उस बेचारे की हालत सोच लें, क्योंकि वो तो इंसान गोश्त पोस्ट का मेरे जैसा इंसान होगा और दूसरी तरफ रोबोट होगा, तो जीतेगा कौन? रोबोट ने जीतना है। और उसको अच्छा फर्ज करें नहीं भी जीता वो, तो कोई मसला नहीं है, वो नया बना के फिर दोबारा ले आएंगे। जान नहीं जा रही, किसी की जान नहीं जा रही। मैं तो होपफुली इनरिप्लेसेबल हूँ, इंसान तो इनरिप्लेसेबल है, मगर जो मशीनें हैं तो कोई मसला नहीं है अगर गलती भी हो गई या। अच्छा, तो पॉइंट ये कहने का है कि मैं यहाँ आने से पहले, आज की आपसे मीटिंग से पहले, मैं जरा से पढ़ के भी आया। देखें, ट्रांसपोर्टेशन से लेके मिलिट्री, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं कि सामान, आपको पता है लॉजिस्टिक सबसे बड़ा मसला होता है वॉर में। मेरे वालिद साहब भी फौज में थे। जिस वक्त एक कोर चलती है तो साथ उसके पूरी हज़ारों ट्रेनें होती हैं, हज़ारों ट्रक होते हैं उसका सामान मूव करने के लिए। अब जब ये ऑटोमेटेड गाड़ियाँ आ रही हैं तो जितना अगर आपका 1 लाख आदमी डिप्लॉयड होता है तो 10 लाख आदमी उनको पीछे सपोर्ट करने के लिए होता है। क्या कहते हैं, मगर अब क्या होगा कि ये पहले स्टेज में कि ये वाले जो काम है ना, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही है इस वक्त सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पे और डेलस की सड़कों पे ऑटोमेटेड गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं है। तो इमेजिन करें कि जो सारा ये लॉजिस्टिक्स आर्मी का सबसे पहला जो ट्रांसफर होगा वो होगा, फिर ट्रेनिंग। अब ये जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आया है, ये वर्चुअल रियलिटी का और ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, इसके थ्रू ट्रेनिंग आपको एक्चुअल चीज़ नहीं, जहाज के पायलट को एक्चुअल जहाज में बिठाने की जरूरत नहीं है, वो वर्चुअल रियलिटी में उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है और इसी तरह एक सिपाही की भी दी जा सकती है। मेटावर्स थोड़ा सा अच्छा देखें, मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये आजकल पॉपुलर किया है हमारे फेसबुक ने और उन्होंने अपना नाम भी मेटा चेंज कर लिया है। मेटावर्स में ये है कि हम क्या करते हैं कि देखें, अभी आप फेसबुक देख रहे हैं ना, तो आपकी स्क्रीन पे फेसबुक है, तो आप फेसबुक से बाहर हैं, आप बाहर से देख रहे हैं फेसबुक को। अब जैसे अभी कोई 15 दिन पहले मेटा क्वेस्ट प्रो उन्होंने VR ग्लासेस लगाए और उसमें थोड़ा सा AR का कॉन्सेप्ट भी है। VR क्या है? वर्चुअल रियलिटी है। नहीं, आपने जब वो ग्लासेस लगाए तो आप समझें, मैंने माउंट एवरेस्ट कभी नहीं देखी थी, तो मैंने पहला काम क्या किया कि माउंट एवरेस्ट के वीडियो देखने शुरू किए वर्चुअल रियलिटी में। तो आपको मैं बता सकता हूँ कि 0 पॉइंट किधर है, बेस कैंप किधर होता है, उससे कैसा नजर आता है, फील आती है। आप देखें 50-60% फील आती है। मेरी बहुत अच्छी एक कुलीग है हिरा, वो हमेशा कहती है कि मैं तो जब मानूंगी मेटावर्स को जब आप मेटावर्स में खाना भी खा सकें। हम अभी तो वो तो दूर हैं कि खाना खा सकें, मगर देखें रहे हवा की फील नहीं होगी अभी आपको, क्योंकि हम अगर वहाँ होते माउंट एवरेस्ट के नीचे तो वहाँ पे हवा भी चल रही होती, ठंड भी होती,
तो वो तो नहीं है, सारी बात है इस स्टेज पे, मगर जो आंखों से नजर आता है और आइंदा कानों से भी जो अभी भी कानों से जो आप महसूस करते हैं वो सब महसूस हो रहे हैं आपको, तो क्योंकि वो माइक के थ्रू और उसके थ्रू। और आप जैसे मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल चीज नहीं देखना। देखें टीवी में खराबी क्या है कि आप जो कैमरामैन दिखाना चाह रहा है सिर्फ आप वो देख सकते हैं, वो 360 डिग्री व्यू दे रहा है। अगर फर्ज करें मैं फोकस करना चाह रहा हूं कि फला आदमी का सामान जो सामने रखा हुआ है, मैं इक्विपमेंट में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मैं अजम्पशन लें तो मैं इक्विपमेंट पे फोकस करूंगा, मैं बाकी चीजों को इग्नोर कर दूंगा। क्रिकेट में भी फर्ज करें कोई आदमी किसी एक खास बाबर आजम का फैन है, तो बाबर आजम मैं देखना ही नहीं चाह रहा बॉल, मैं तो चाह रहा हूं कि बाबर आजम फील्डिंग कर रहा है, मैं उसको देखना चाह रहा हूं कि वो क्या कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे टर्न करूंगा, अच्छा वो आपको सारा सेंस कर रहा है चारों तरफ कि आपका मुंह कैसे, और ये सब कनेक्टेड है एआई से। ये एआई के बगैर पॉसिबल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर मेटावर्स भी, ये जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो उसमें एआई का बहुत मेजर हाथ है, इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज में। और इसी तरह आप क्या कहते हैं, तो ये दुनिया बदल के रख जाएगा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए क्रिटिकल तरीन है कि देखें हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन है, इसलिए डॉक्टर आरिफ अलवी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आज से 3-4 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था मास लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग देने का। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो माँ बाप है ना, अपने बच्चों को नई दुनिया के लिए अगर तैयार नहीं करेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए भी होगी और इंडिविजुअली लोगों के लिए भी होगी। कितना लेट है हम? लेट तो है हम काफी लेट है, ज्यादा लेट नहीं है। अगर अभी देखें आप इससे अंदाजा करें, जबकि हमें इस तरह कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मगर फिर आखिर में तो दुनिया में कंपैरिजन ही होता है। इस वक्त इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन हैं, हमारी 3 है, तो 150 में और 3 में तो काफी फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क है। और देखें इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम एजुकेटेड यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा ये भी सारा इससे मसला हल होता है। अच्छा बच्चे इंटरेस्टेड भी हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो सारे खुद फेसबुक पे पले बड़े, और मोबाइल आपका बच्चे आपसे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करते होंगे बल्कि आपको सिखाते हों, सारे काम उन्हीं से करवाने पड़ते हैं तो बच्चे बहुत आगे हैं। मसला क्या है कि जो हमारी पुरानी जनरेशन है उसको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे और उसके लिए ट्रेनिंग। और अभी हम एज ए कंज्यूमर तो कर रहे हैं। देखिए फेसबुक जितने पाकिस्तान में फेसबुक बहुत कमा रहा है पाकिस्तान से, बिल्कुल सही और दूसरी कंपनियां कमा रही हैं, मगर हम यूजर एंड पे तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने में, मगर प्रोड्यूस करने में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो आगे चल के और मसला हो जाएगा। अभी तो है ही, और ज्यादा मसला हो जाएगा। आप कभी वबाओं की गुफ्तगू चल रही होती है, कॉन्गो वायरस जी अफ्रीका से नहीं आ रहे हैं, उनको ज़रा चेक करना चाहिए, ऑटोमेटिकली पता चल रहा होता है कि किस जगह पे ये सिम्टम्स पाए जाते हैं। लेकिन कोई नया वायरस आने वाला है, वो दुनिया के किस खित्ते को मुतासिर कर सकता है, इसकी भी कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ काम हो रहे हैं? देखिए काम तो बहुत हो रहा है। थोड़ा सा ये है कि हमारे ना अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो पाता है ना इस मुल्क के अंदर, तो वो हमारे थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस ही हो पाता है। पॉलिटिकल विल का जो वैक्यूम है ना, वो हमें बड़ा डिस्करेज कर रहा है। आज आईटी इंडस्ट्री जिससे से बात करी, इंडिया तो चले बड़ा मुल्क है ना, आप कह सकते हैं कि वो बड़ा मुल्क है तो इसलिए उनकी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन फ़िलीपींस तो पाकिस्तान से भी छोटा मुल्क है, उसकी 24 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी की। तो ये तो पहले तो ये है कि हम तो गुजारिश यही करते हैं कि जो हमारी जो पॉलिटिकल विंग लोग जो हैं रूलर्स, वो अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बना सकें तो इंटरफियर करना छोड़ दें। पहली चीज़ गुजारिश है। अगर आज कोविड पे कंट्रोल हुआ तो ये एक एनसीओसी जैसा इदारा बना था। देखिए हमारे पास जो, अगर आप मेडिकल और इसकी काम के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसका मैं एक चैलेंज को इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 18th अमेंडमेंट आई, 18th अमेंडमेंट से हुआ ये कि हेल्थ हो गई डिवॉल्व सूबों के पास। तो जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि नेशनल स्पिरिट में कोई पॉलिसी बनाई जाए सर्वेलेंस की, तो अब ज़ाहिर सिंध तो सिंध की बनाएगा ना, पंजाब पंजाब की बनाएगा। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट आपका इवेंट है कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, हेल्थ हो गया जैसे, जिसमें एक नेशनल पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है और उसकी कोलैबोरेशन इंटरनेशनल इदारों के साथ होनी बहुत ज़रूरी है।
दूसरी चीज़ ये आ जाती है, तो अगर ये हो जाए तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। एनसीओसी के थ्रू ही हो सकता है, फोर्सेस के थ्रू ही हो सकता है जी, वरना कोई पॉलिटिकल क्योंकि फोर्सेस ही एक वाहिद है ना जो पूरे पाकिस्तान। जी, चारों सूबों में नहीं वो यही तो एक देखिए, और इसी को तो डैमेज कर रहे हैं ना लोग आजकल। हो ये रहा है कि हर मुल्क की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है वो हमारी रिस्पेक्टेड आर्म फोर्सेस है। आप पूछें बस मैं कुछ और एग्जांपल भेजता हूँ। साउथ कोरिया की क्या है? साउथ कोरिया की मिच्योर डेमोक्रेसी है। ईरान की क्या है? नेशनल स्पिरिट है। ईरान में 30% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अरब्स, टर्क्स और कुर्ड्स रहते हैं, किसी को नहीं पता। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे मुल्क की है, आज अगर देखें ये जो हमारे डिफेंस का एक्सपो सेंटर लगा हुआ है आर्म्स फॉर पीस के शोबे से, और एक्सपोर्ट करने के बारे में और कोलैबोरेशंस डेवलप करने के लिए, इससे ज़र मुबादला आएगा, इससे एक इमेज बिल्डिंग भी होती है। आज दुनिया के जनरल्स और सारे स्टेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ जो ये जो डिफेंस आए हुए हैं, तो आज वो पीस का एक मैसेज लेके जा रहे हैं दुनिया में। ये चीज़ें साथ होना, कंबाइंड होना, और डेफिनेटली अगर आर्म फोर्सेस लीड करेंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और आज ये जो टॉपिक उठाया गया है वो भी आइडियाज़ पे इन्हीं लोगों ने उठाया है जो आज सारे अखबारों की जीनत बढ़ाए और लोगों को थॉट प्रोवोकिंग पे लगाया हुआ है इसने। अच्छा, एक बात मैं बस खत्म थोड़ा सा बात को शॉर्ट करते हुए, वो ये है कि आज के बाद जो फ्यूचर वॉरफेयर होंगी, आजकल हम हाइब्रिड वॉरफेयर से, पहले हम कन्वेंशनल वॉरफेयर पे थे, अब हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजर रहे हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों की। और आइंदा आने वाले टाइम्स के अंदर हम जर्म वॉरफेयर और से गुजरेंगे। और ये कोविड जो है ये इसके लिए एक बहुत बड़ी आई ओपनिंग कर रहा है, और इसके लिए बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं कि अगर ऐसी वबा कोई आती है या जानबूझ के फैलाई जाती है, और उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये जो प्रोग्राम है ये और लोगों को क्रिएट करेगा अवेयरनेस कि इसके अंदर शामिल हों। एक तो ना सिर्फ कि नेशनल स्पिरिट में, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इसके अंदर आप आके कैसे बेहतरी ला सकते हैं, दुनिया को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। चीज़ भी ज़रूर बताइएगा, मिसाल के तौर पे अभी जैसे कोविड आया था उसमें बहुत सारे लोग बताते नहीं थे कि उनके घर में कोविड का पेशेंट है, वो छुपाते थे कि उन्होंने हॉस्पिटल नहीं भिजवाना है। अब अगर ये जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं कोई अप्रोच कर सकते हैं या कोई सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, ताकि ये आवाम के लिए है, ये लोगों के लिए है, तो इसको हम छुपा नहीं सकें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसी वजह से जैसे उन्होंने बताया ना कि उसकी जो हमने वो जो भी हमने उसकी वो जो ये जो डाटा डिटेक्ट किया कि कोविड किसका था जब हम एनसीओसी को रिपोर्ट करते थे, उसकी वजह से बहुत ये फ़ायदा हुआ कि जो लॉकडाउन्स लगे वो माइक्रो लेवल पे लगे, पूरे शहर में बाद में बंद नहीं हो रहे थे, सिर्फ इलाके लॉकडाउन हो रहे थे। और इसमें थोड़ी सी हम सबकी अपनी ज़िम्मेदारी भी है। ये जो हम छुपाते हैं ना चीज़ें, ये भी बड़ी गलत है। एक चीज़ मैं ज़रूर बात को ख़त्म करते हुए वैक्सीनेशन के बारे में बोलूँगा। ये जो आवाम की आपने बात की ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंसान को भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। वो सीखना ये चाहिए कि आपको मैं बताऊं कि मैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट हूँ, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से जहन तो मफलूज नहीं हो जाएगा, आँखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, दिल की धड़कनें तो बंद नहीं हो जाएंगी, मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, मेरी बीमारी तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगी, जिगर तो नहीं फेल हो जाएगा। हमारे लोगों को यही परेशानी थी कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये जब कॉन्सेप्ट एजुकेशन से फैलेगा, और अगर हमने आज एजुकेशन नहीं ली और लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हुई, तो डेफिनेटली ह्यूमन फिर रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और इसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी विजडम को लेके आएँ। बिल्कुल सर, एक आखिरी पैगाम हमारे यंगस्टर्स के लिए आपकी जानिब से जाएगा, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक शोबा ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी सेक्टर अब ऐसा नहीं बचा है, और बल्कि हम इस इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने तमाम उन कामों को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो सर, ये जो हमारी नौजवान नस्ल आपको सुन रही है उनके लिए आपका पैगाम, ये आपका कैमरा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वक्त चाइना की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है, इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है। आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं, बहुत सारी और भी वजूहत हैं महंगात की, मगर मेन वजह यह है कि ये राइज ऑफ द मिडिल क्लासेस इन एशिया।
अच्छा, जो ये मिडिल क्लास उबर के आई है, इनके पास पैसे हैं, ये सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से पैसा कमा रहे हैं। ये चाइना में बैठ के एक बंदा जो है लाख $1.5 लाख कमा लेता है, जो कि पहले $200 पे था मिडिल क्लास में, अब वो अपर मिडिल क्लास का हो गया है, तो वो गोश्त भी खाएगा। अगर हमने अपने आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी से नहीं जोड़ा और टेक्नोलॉजी इकोनॉमी से नहीं जोड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमें खाना भी मसला हो जाएगा। और अभी भी आप देखें गोश्त कितना महंगा हो चुका है। ये जो महंगात की एक वेव है दुनिया में, वजह क्या है कि जो टेक्निकल लोग हैं जिनके पास पैसा है वो मार्केट से उठा रहे हैं सामान, और हम और आप जो कि पुरानी तरीके से जिंदा रह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उसकी कीमत में खरीद सकें, तो क्या होगा? हम भूखे मरेंगे, वो खाना खाएंगे। तो अगर हमने जिंदा बचना है आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हमें अपने आप को सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वेब3 और जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे सारा भलाई है। देखें, दूध पीना अलग चीज़ है और भलाई तो सारे अमेरिकन और दूसरे इंडस्ट्रियल जो मुल्क हैं वो खा जाएंगे, हमें वो दूध भी नहीं मिलेगा, हमें वो छाछ मिलेगी दही की। तो अगर हमने अपने बच्चों को ट्रेन नहीं किया और अपने आप को ट्रेन नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ ये बच्चों के लिए नहीं है, ये जो बड़ी उम्र के भी लोग हैं, मैं खुद 60 का हूँ, मैं तो हर रोज़ अपने आप को रीट्रेन करता हूँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरे साथ दो जो मेहमान बैठे हुए हैं, ये दोनों भी अब रोज़ाना पढ़ के अपने आप को, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारी उम्र क्या है, जो भी उम्र है, अगर नए दौर में ज़िंदा रहना है तो नए तरीके से रहना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। ज़ियाउल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे आइडियाज़ 2022 शो के मेहमान बने, BTV के मेहमान बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई चीज़ अगर आप, कोई पैगाम कंप्लीट हुआ या कुछ अगर कहना चाहते हैं सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जी है। असल में देखें, ये हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, मैंने अभी पॉपुलेशन की भी बात कर रहा था, हमारी आर्म फोर्सेस बात ये समझ रही है। देखिए, हमने एक वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाया JF-17, जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जब ये पहली दफ़ा बना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शामिल थे, तो मैं खुद भी हैरान हो गया जब मेरे उनसे बात होती थी कि माशाल्लाह ये मार्वल है। मगर अब नया दौर आ रहा है, अब 5th जनरेशन में तो स्टेल्थ और इस टाइप के, मगर 6th जनरेशन फाइटर बन रहे हैं। 6th जनरेशन फाइटर और 7th जनरेशन फाइटर में हमारे दुनिया के बेस्ट पायलट्स हैं, मगर बाय द टाइम 7th जनरेशन आएगी तो पायलट की ज़रूरत ही नहीं होगी। जो इस वक्त नए किस्म के जो 6th और 7th जनरेशन में, अभी वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हुआ हुआ, मगर 6th और 7th जनरेशन जो फाइटर होंगे वो रोबोट्स होंगे, वो ड्रोन्स होंगे, और वो ड्रोन्स की फाइट होगी, क्योंकि जैसे पायलट है वो 9G से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ड्रोन तो 16G भी बर्दाश्त कर लेगा जब टर्न होगा। तो हमें ये हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो पॉपुलेशन के लिए तो मैंने बता दिया, आर्म फोर्सेस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि आजकल जहाज़ JF-17 और F-16 में कोई मेजर फ़र्क नहीं है, मगर जो F-35 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका सॉफ्टवेयर, दैट इज़ द की। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच ज़ियाउल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच मुज़म्मिल अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच फरहान ईसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा मैं देना जी प्लीज़ प्लीज़। इस वक्त जिस तरह फरहान भाई ने फरमाया कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, और ये मैंने कल भी जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो इसके ऊपर मैंने एम्फेसिस किया था, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती हैं अपने नज़्म ज़ब्त के एतबार से, अपनी कंट्रोलिंग के एतबार से, अपने काम के एतबार से, तो कोई भी काम जिस तरह हर चीज़ के अंदर किसी एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज़ होती है किसी भी शख्स के अंदर, इसी तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस की ये कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरीके से ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, हम चाहते ये हैं कि आर्म फोर्सेस इसके अंदर कदम आगे बढ़ाएं। अगर वो JF-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान के अंदर बना सकते हैं, सुपर मशाक तैयारे पाकिस्तान में बना सकते हैं, जो इस वक्त हम बेशुमार मुल्कों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं कि वो एक पूरी जनरेशन को डेवलप करें जो मेटावर्स, पाइथन लैंग्वेज और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए काम ये करना पड़ेगा कि आर्म फोर्सेस के साथ प्राइवेट सेक्टर्स को और ज़िया खान साहब जैसी शख्सियात को
आगे बढ़ के सैलानी जैसे इदारों को, जेडीसी जैसे इदारों को, एडी जैसे इदारों को आगे बढ़ के इनके साथ काम करना होगा, ब्रिज करना होगा और इसके लिए एक पूरा लाहे अमल तैयार करना होगा जिसकी बुनियाद पे अगले 2 से 3 साल के अंदर हम एक बड़ी तादाद के अंदर आईटी एक्सपर्ट्स को पैदा कर सकें और पाकिस्तान को आईटी की फील्ड के अंदर, जो हम इस वक्त इंडिया से हम कह रहे हैं या फिलीपीन से कह रहे हैं बहुत पीछे हैं, हमें इसके अंदर आगे जाना होगा। लेकिन उसके लिए कोर रिसोर्स जो है मैं समझता हूँ कि नज़्म ज़ब्त के एतबार से, कंट्रोलिंग के एतबार से, सिस्टम के एतबार से हमारी आर्म फोर्सेस को इसके अंदर अपना रोल प्ले करना होगा। रोल उनका हो सकता है। फरहान भाई, आपका भी कोई एक पैगाम? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये, आपने यूथ की बात की थी तो मैं यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी जो अभी जो हमारी जनरेशन आई है ना, जी जनरेशन, ये थोड़ी हम लोग सोचते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि मेरा क्या फ़ायदा है, कुछ करने में मेरा क्या फ़ायदा है। मैं उनसे सबसे गुजारिश करूँगा कि हम सब ने मेरे ख़्याल से हम सब ने दुनिया ट्रैवल की है और बहुत दुनिया देखी है और रहे भी हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से अच्छी जगह पूरी दुनिया में नहीं है। आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, ये सारी एक्सपोर्ट कर सकती है। अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करें। आप यहाँ पे लोगों को जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान को स्ट्रेंथन दें। और अगर आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे तो यहाँ के जितने बच्चे हैं, अगर कोई बाहर भी जाता है या सॉफ्टवेयर के लिए जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ऐसी चीज़ बनाएं कि जो वर्ड्स आपके हैं, जो आप किसी से कमिट करें उसको पूरा करें। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा, अंडर कमिट ओवर डिलीवर और पाकिस्तान फर्स्ट। Thank you very much Farhan Isa साहब, thank you very much Muzammil Atar साहब, and thank you very much Ziaullah Khan साहब। It's an honor to chat with you और आपके जो पैगाम गए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। तो ये हमारे तीनों एक्सपर्ट्स को आपने सुन लिया होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस आइडियाज़ 2022 का अगर मैं ये कहूँ कि चंद बड़े मकासद में से एक मकसद है तो ये बेजा ना होगा। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती। जो ज़ियाउल्लाह खान साहब ने एक जुमला कह दिया, अगर हमने अपने आप को, अपने इदारों को और अपनी तमाम वो चीज़ें जो हमें ज़िंदा रखने में मददगार साबित होती हैं उनको ज़िंदा रखना है, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ख़ास फोकस हमें ज़रूर देना होगा और हम सबको देना होगा। कि किसी एक सेक्टर के लिए ज़रूरी नहीं है, हर शोबे की ये बुनियादी ज़रूरत दिखाई दे रही है। और आने वाले वक्त में अगर इसका सहारा नहीं हुआ तो फिर शायद हम सब बेसहारा हो जाएंगे। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस आइडियाज़ 2022 के स्टूडियो से इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद गेस्ट आते रहेंगे, उनसे गुफ्तगू होती रहेगी। जल्द मिल रहे हैं, जल्द आए, अल्लाह निगहबान। Assalamu alaikum. My name is Haider Mahbub Hussain and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022 and we are launching a defense magazine which is Pakistan's first international defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much. Hello. My name is Ayhan Shenturk and I am the Business Development Manager for Profen Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995 and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground stations, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up to 7.3 meter big ground stations. So as I said, that's our main expertise. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company.
We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a material science team helping us with the design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings or telephone meetings with our contacts in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. So thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद राशिद इकबाल तिरमिज़ी। मैं इंट्री ब्रेड को लुक आफ्टर कर रहा हूँ यहाँ। मैं इस कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ और हमने कल से ये स्टॉल यहाँ लगाया है और हमारी कंपनी को अभी तकरीबन 10 महीने हो गए हैं इंट्री ब्रेड को, और हम कराची को काफ़ी अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। हम हाइजीनिक ब्रेड पे काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन ब्रेड हम बना रहे हैं जो कि यूरोपियन प्लांट पे तैयार की जाती है और हाइजीनिक सिस्टम के तहत तैयार की जाती है। इस वक्त इतनी अच्छी ब्रेड कोई भी नहीं बना रहा, क्योंकि हमने कोरंगी में It's 3 p.m. Assalamu alaikum. My name is Heather Mahbub Hussain, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022, and we are launching a defense magazine, which is Pakistan's first international defense magazine. As well as we are giving all sorts of media solutions, which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas, and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much. Ideas 2024
brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Park Global is basically running a buying house. We are facilitating with the different countries' buyers with Pakistan industries, and we are giving a one window sport so that the visitors don't have to visit again and again the same stall or the same product. We facilitate them, and with shorter time we make the arrangements. And recently we make 2-3 deals with the Jordan government and Zimbabwe and Nigeria. And by the grace of Allah, we are very successfully running this Park Global Supply Solution. In Pakistan, Depot is presenting very good opportunity to all our potential buyers. And for the Pakistan industry, like small arms and textile industry, it is a big opportunity to produce the items world standards. And for the Depot and Badar Expo, I am very thankful. They have provided us this opportunity for the international buyer. We are linking with them. Thank you very much all. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब का आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चों का ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन करेगा। ये AI बेस होगा और इसके अलावा स्टोरीज सुनाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा और बहुत सारे और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हमने ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब जो कि नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके अल-शिफा हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद कमाल है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। GIDSG पाकिस्तान की लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड कंग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडिया स्टार्टेड। जी, आई हैव हैड द ऑनर के मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह 9 हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, क्योंकि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। हमारे अपने स्टैंड पे इस वक्त मेरा ख्याल है कि 50 से ज़्यादा डेलीगेशंस तो मैंने खुद रिसीव की हैं, और इससे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं, तो दैट मीन्स कि एग्जिबिटिंग कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन। बहुत सारे और मुल्कों का इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखता हूँ जी कि जो डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आप अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हर 2 साल बाद दुनिया के आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आ सके और आपकी चीज़ों को एवेल्युएट कर सके। आई विश डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि under their leadership and management, they can take this platform and exhibition to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आतिफ कटाना है और मैं जीएम कॉर्पोरेट सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टायर के हवाले से और शूज़ के हवाले से पहचाना जाता है। हम लोग आम लोगों के लिए जो जूते बना रहे हैं, उनके अलावा हम लोग फोर्सेस के लिए भी जूते बना रहे हैं, जो कि कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें भी बना रही है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोग आर्मी के लिए सियाचिन में जो शूज़ इस्तेमाल किया जाता है, के शूज़, वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा हम गैस मास्क आर्मी के लिए बना रहे हैं, जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग अल खालिद और अल ज़रार के लिए कुछ रबर पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक जेवी हुआ है चाइना की एक कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ, और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ट्रक बस रेडियल के जो टायर मुतारफ करवाए गए हैं, वो भी सर्विस ग्रुप की तरफ से करवाए गए, सर्विस लॉन्ग मार्च की तरफ से। इससे पहले ये सारे टायर पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते थे। पाकिस्तान में मार्केट साइज ट्रक बस रेडियल का तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक साल में, और हम लोग जो प्लान करके इस पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2 या 3 साल बाद 2.4 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की बना रहे होंगे। और मार्च में ये इनॉग्रेट हुआ है, और इस वक्त हम लोग अमेरिका को ये टायर पाकिस्तान से बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र की बात। आइडियाज़ के हवाले से मैं ये बात करूंगा कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ममालिक से लोग आते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, और दुनिया को ये जानने में आसानी होती है कि पाकिस्तान भी बहुत सी चीज़ें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नो डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के लिए भी है। I would like to start with extending my thanks, and I would also like to say Assalamu Alaikum to all the dignitaries, delegates, members of the forces, our chief guest, Vice Admiral, our chief guest, Admiral Shahid Karimullah Saab, DG Nima, Vice Admiral Ahmed Said Saab, and members of the business community, all others present over here, Assalamu Alaikum, and thank you for granting me this audience today. I will be talking about the challenges of our shipping industry from a private sector perspective and how that relates to other stakeholders. The area of focus of this presentation is the energy supply chain. And the reason why I have chosen this topic is because I truly believe that energy is the biggest security factor for any country, especially a country like Pakistan that is heavily dominant on and reliant on energy that is being imported. Our energy comes from crude oil, from LNG, from coal. We do have indigenous local sources that we are developing, and I hope that goes on and becomes a good percentage of our energy mix. But as of today, we are a nation that imports the bulk of its energy and is reliant on imports. And that import is done through the shipping routes, through the shipping supply chain. And if we resolve those inefficiencies, some of the inefficiencies, and we are also able to capitalize on our existing shipping infrastructure, on its utilization, we can make our energy mix and our energy supply chain much better, and we can be operationally and economically efficient in managing our energy. As you already know, energy impacts all of us, from the gas in our cooking stoves, to the petrol in our car, to the gas and other sources of energy that we need to run our industries, to run our navy fleet, to run our jets, and so on and so forth. So it is a very important factor for any nation. That is the reason why I have chosen this topic. I will be giving a few examples that will show us two sides of a coin about how we are, it will show us why we are inefficient in some ways, and how, on the flip side, by taking some small measures, we can become much better and much more efficient. So, first of all, I would like to just present the impact of
inefficient energy supply chain or the impact of high energy costs, let's say. So there are three components to the energy supply chain, broadly speaking. One is the product. The product is imported and its price is driven by international markets. That is not something that is in our control. The second are shipping costs, which is something we can control because a lot of our energy can be transported through the Pakistan National Shipping Company and its fleet, and we can manage our shipping costs in that way. I'll come and address that point later in the presentation. The third part is the supply chain, the berths, the storages, the discharging methods, the pipelines, the connectivities. These three make up the energy supply chain, broadly speaking. So a high energy bill translates into inflation, into a current account deficit, where we face devaluation, where we face inflation because of the devaluation, and that leads us to a certain sort of debt crisis every now and then, and also encourages hoarding because there is an imminent or shortage of commodities and energy products, and that leads to a certain sector which hoards the current inventories and aggravates the situation rather than helps it. So if I talk about the oil import, I'll be focusing on two products in my presentations. I don't want to bore you too much on this Sunday morning, so I will try and keep it simple and not too dry. So I've chosen oil and I've chosen to speak about coal to give you an insight and a holistic view about what can be done. So if you talk about oil imports, we have two ports mainly that cater to our oil imports: crude oil, furnace oil, petrol, diesel. All of this comes through Port Qasim and Karachi Port. I'll talk about Karachi Port. Karachi Port has number of berths. We have OP1, OP2, DB1, DB2. They all discharge chemical, petrochemical, and oil cargoes. So we have multiple berths over there. And most of the time, you'll find that there are idle berths at KPT for discharging oil and related products. However, the storages in KPT are slightly inefficient. They haven't been developed. The infrastructure, the pipeline connectivities has not been done over the last 10 to 15 years. Now, in contrast, if I talk about Port Qasim has very efficient storages. It is linked all the way from pipeline up to Punjab. It has multiple storages. It has a good mix of storages, but it only has one berth to discharge all oil cargoes. So you see how KPT has inefficient storage, but multiple berths, but Port Qasim has one berth and multiple storages. So the problem and the solution are sort of one and the same, in the sense that if we connect the both ports, if there was some sort of connectivity between both the ports, they could benefit off that synergy. They could benefit off that. Port Qasim does not need to make more storages, and KPT does not need to make more berths. A collaboration, a synergy, a little bit of discussions between both the ports will resolve the problem. So without spending much, we will be able to capitalize and increase the capacity utilization of the existing infrastructure. So that is a little example of how we can go about it. Just to give you a little bit more insight, there are vessels that call on Port Qasim. There is empty storages at Port Qasim available, but due to just one berth discharging one vessel at a time, we have up to 5 to 10 vessels waiting for the berth, incurring damages, sometimes to the tune of $100,000 per vessel, sometimes higher. You build that up onto 10 vessels, that's $1 million. And obviously for a country that is working on its foreign exchange reserve, such a situation can be avoided, should be avoided. And there is another port, which is not too far away from Port Qasim, that has multiple berths. All we need to do is connect them both, so we can discharge 4, 5, 6 vessels at one time. We can store our energy, we can be more efficient. Talk about coal a little bit. We are developing third coal, and I think that is a very good initiative. That is something that should go on. It should become a bigger percentage of the overall coal mix. That will help us not be reliant on imported coal, something we should all prefer. However, the reality as of today is that in 2021, Pakistan imported 16 million tons of coal through seaborne routes. And it is expected that with the added power plant capacity and the expansion of the cement sector, this will go up to 25 million tons over the next 2 years. That 16 million tons translates to 290 vessels per annum, approximately. That's 24 vessels per month. And
during a proceedings of the Supreme Court in 2018, there was a decision was made where all coal imports were destined towards Port Qasim to a single purpose custom built terminal, which is fine. However, that terminal also has one berth. It can only discharge one vessel at a time. The time that that terminal was being built, Pakistan imported less than 1 million tons a year. Now we import 16 million tons a year. The capacity is not enough. The vessels, they wait outside during high traffic season, and they incur again damages up to $100,000 and $150,000 per annum, per vessel per day. I'm sorry, and that increases our import bill. And at the same time, another port, KPT, which is an hour away from Port Qasim, has idle berths lying there that can discharge coal, or a purpose-built terminal can also be developed at KPT, or some kind of railway connectivity can be done so that the discharging from the vessel onto the land and forward onto the factories is much more efficient, and we don't pay extra dollars for our energy. So if I was to sum up the gaps, if you realize both the topics that I talked about, KPT, Port Qasim, crude oil, coal, we aren't talking about any new projects that we need to do. The idea that I'm trying to float over here, I'm trying to give a dissected bird's eye view that we have the capacity within the realm. We just need to have a smarter approach. There is a concept of smart hub or smart port, which basically talks about how ports can talk to each other, how they can share data on one dashboard, and they should use that data to deploy their capital in a much more efficient manner. So in efficient capital deployment, where one port has an existing capacity which is idle, and the other port is spending more money to build the same storage facility or the same discharging facility, is inefficient capital deployment. A little bit of synergy that we can build between both the ports, between the authorities, that will help them deploy their capital in a better way and also make themselves much more efficient by building those synergies between themselves. Another initiative or another drive that we need to focus on is the impact of PNSC, the Pakistan National Shipping Corporation. The Pakistan National Shipping Corporation is a hidden gem that we must focus on. It is the only company in Pakistan that charges its freight in PKR. We don't have any other. If we want to pay for our shipping costs in Pak rupees, we don't have any other option except PNSC. So PNSC should be supported to increase its fleet so that it can cater to maximum energy import. Its focus is already on oil and crude oil imports that come into Pakistan. It should increase its fleet. We are trying to increase its fleet. We are talking about how PNSC should be allowed to procure second-hand vessels. It should be exempted from PEPRA rules so that it is able to increase its fleet, and we don't have to pay for our shipping costs in dollars. We pay for them in PKR. In fact, if we build excess capacity of PNSC fleet, PNSC will not only be able to reduce our shipping bill, it will be able to bring in foreign exchange by selling its freight and vessels to the foreign market. Also, if we are efficient and we build these synergies between our ports, we would also be able to benefit from low commodity prices. We all must remember when COVID hit, oil went down to $20, coal went down to $40. China and other countries in the region who had efficient energy supply chains, they bought commodities at very low prices, they stored them, and they benefited off them when prices were high. We've seen this same issue with us in LNG. When the prices are very high, we are unable to purchase them, and that leads to a gas crisis. So that is another thing that we need to focus on. The government's part, obviously, a little bit of activism, a little bit of synergy, sharing data, flow of information. I think platforms like NEMA are a great platform where all of these authorities, stakeholders can get together, share their views, help
give a holistic view, a bird's eye view, rather than working in small pockets. We can share our information, we can share the data, and we can help spend less and become much more efficient. Also, incentivizing the private sector, and in the private sector, or I would always say that we should support local companies. PNSE is a great example of how a local company is benefiting us for the same services that we could have taken from international companies. That does not mean that we should discourage international investment or JVs, but local companies should be incentivized to build railway routes, shipping routes, terminals, ports, and multiple of those facilities, so that there is more competitiveness, and less monopolization, and the market should become more efficient automatically once there is more competition. So that would be all for me, and thank you very much for your time. Ideas 2024 brings together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2G, and B2B interactions, joint ventures and investments in defense production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussions on global challenges within the defense sector. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Askari. I am business head of dynamic engineering automation. You can see मेरे पीछे भी कंपनी देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे we are a company जो हम alternate gas solution देते हैं पाकिस्तान में. आपको पता है आजकल के जो गैस है वो पाकिस्तान में नापैद हो रही है. उसी को सामने रखते हुए हम पिछले कोई 10 साल से उनके साथ 11 साल हो गए हम alternate गैस solution दे रहे हैं जो कि एनर्जी नेशनल गैस को रिप्लेस करते हैं. एलपीजी बेस्ड सिस्टम होते हैं. अब तक हम कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इदारों में और तकरीबन 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये गैस का सोल्यूशन दे चुके हैं. जहाँ पर सुई गैस नहीं होती है वहाँ पर हम एलपीजी बेस्ड एसएनजी सिस्टम देते हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह से गैस पाइपलाइन में ट्रैवल करती है जिस तरह की नेशनल गैस ट्रैवल करती है. और वैसा ही एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है और इसी बिल्कुल सेम बिलिंग होती है. इसमें से अब तक 8 प्रोजेक्ट हम SSGC के प्लेटफॉर्म से लगा चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे जो लग रहे हैं वो SNG पे लग रहे हैं. सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा SNG पे लगा रही है गिलगित के लिए. पूरे गिलगित शहर पे हम ये SNG का सोल्यूशन दे रहे हैं. और अभी रिसेंटली कराची में हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 8000 घरों के लिए वो बैरियर टाउन में है जहाँ पर बैरियर टाउन के तमाम घरों को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी और मीटर्स के जरिए तो उनको बिलिंग की जाएगी. वो बैरियर टाउन का अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है और जो गिलगित का प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है. आइडियाज़ में भी मसला इंटरनेशनल एग्जीबिशन है वहाँ पर शिरकत से बैठ के हम UAE में और अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं. So my speech today will be about artificial intelligence and its evolution in the defense market. If we can please have the slides. So in time when the slides are displayed, I could probably show you. You might have heard Industry 4.0. And there in the manufacturing industry, for example, or in the broad sense, the sense the world works is actually divided into 4, paradigms or periods in which science has prevailed in different ways. So the most recent one, the Industry 4.0 era, actually it comes after the Industry 3.0 era of robotics. And this one, the current era, which is post 2015, is more about integration of artificial intelligence with all sorts of services. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, or big data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas. And basically, at the back of all this, without artificial intelligence, nothing would actually work. Because with what we do with all the data to collect with IoT, for instance, if there is no AI behind it to actually process the data and take any intelligent decisions, then what's the use of having all that data? Similarly, there are proven examples of, for instance, in medical science. There's research back even in the 90s. This is before the invention of deep learning, for example, that with the normal machine learning, a lot of complex medical problems were actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world, in the world of today, is perceived as, most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make sense of that data, and we're extracting some information and, presenting it in a, way that is useful for humans to actually process or make decisions.
The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life agents and real life things which actually implement AI in the real world. And that is like most obvious when it comes to defense products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example, for the Air Force, which the US Air Force has. That, for instance, you know that they have already succeeded in flying an F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on, you know, a wingman flying with a real pilot and the plane being totally pilotless. And a lot of the decisions to be taken by the Loyal Wingmen basically depend upon the data, but they're real-time decisions which have elements of all sorts. The implementation of AI can come from search-based algorithms, it can come from logic-based algorithms, and it can come, some aspects of it can come from the machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply in what sort of a problem, in what way. For this reason, what usually is said is that AI is as good as the mind behind AI that actually writes the program, right? So the more the comprehensive the data is, and the better the mind that is actually writing the artificial intelligence code, that actually, you know, gives us the manifestation of how good an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of the slides being late and my being able to talk to you freely, I can, you know, tell you a little bit about the AI seminar, which has been a big effort with C4I and with Depot, and it's had several legs. So it has two components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component, which is today, is with 4 keynote speakers, 2 of them foreigners who have actually made time to come to Pakistan, and like also Dr. Jawad Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we're going to have presentation from, it's a competition-like format in which papers and projects, ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there we came down to 70 after evaluations. After 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be presented here. So great effort done by Depot and C4I with some, you know, input from the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications or you could say technologies which are useful, you know, in the form of including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there'll be a lot of instrumentations and sensors, etc., which will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think since there are successful examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second World War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you could see that there's a lot of new resources are evolving, and the defense technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now, incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin with them. So formally, the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market, dynamics, and trend analysis. Next, please. Next slide, please. Okay, so a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the Department of AI and Robotics back in 2009 at NUST after my PhD from Japan. And this is the oldest program in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually interact with the real world. For example, the robots that you see on your left and my right, these are the humanoid robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my first projects that was covered in the media a lot. And this was about 6 robots on one side, 6 robots on the other side. And they're completely
like playing with each other autonomously without any human intervention, without even connecting to an external computer, with a pre-trained algorithm which we actually train and we feed inside the robot, and they work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. There are technologies for rehabilitation which we have made for Sakura wheelchairs of Japan. And there are other projects, for example, this prosthetic hand project, which we worked with AFIRM. And this one has tactile sensation, which actually gives back feedback to the humans. And actually, on two of these, like the soft grasping and the hand projects, we won Best Paper Awards in London and Sydney as well. So the prosthetic leg you see, this is also AFIRM actually. So this is an adaptive leg, which actually adapts to the walking speed of the person. So a lot of other projects like that. This is just a glimpse of the sort of projects that we do. Next, please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded through the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2016, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistani universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, they come forth. And looking at their research, looking at the background of their work, they awarded funding to 9 labs across Pakistan. I was very fortunate to be one of them. And then again, through competition, select which one person should lead the whole center. So right now, like I'm leading the center as the National Center of Artificial Intelligence. 9 labs are there. And we've also awarded 12 research funded projects in different domains of artificial intelligence. So we're very applied. We actually implement AI, and a lot of it is deployed in the real as well. Next, please. So coming to artificial intelligence and its significance. We said the financial impact of artificial intelligence, this saying from Forbes is actually very insightful, that it is forecasted to add 15.7 trillion US dollars to the global GDP by the year 2030. The main reason is that this technology is general purpose. And it has applications that span industries like healthcare, like transportation, like financial services, energy, and so on. Some consider AI to be on par with what we saw with the evolution of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody is saying that AI is so significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So another say, for example, that whoever leads in AI will rule the world. So all this buzz around artificial intelligence, what's so special about it, and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. Let me share with you a small quote that actually extracted one of the letters which 3,000 researchers from around the world actually signed and sent to the UN. So this the quote reads that autonomous weapons which threaten to usher in the third evolution in warfare after gunpowder and nuclear arms will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever and at time scales faster than humans can comprehend. So this is the perception about AI right now, particularly with focusing on defense, right? That the scale of the war and also speed of the war will go behind, completely beyond the way that we've been fighting wars before. And with completely autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Israel and its neighbor, like the Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real-world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got the Loyal Wingman project, autonomously flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I didn't show any pictures of naval systems here, but there are autonomous ships as well. There are submerged vehicles too. So the helicopters, this one example, this is like a Black Hawk helicopter. So this is Project Elias. Also, there are like land machines also, this Mars project, for instance, this Black Helmet, for example. So all of these projects actually are autonomous agents that work in the warfare strategy, and they actually also not at just this level, also at the tactical level. I'll come back to that in the next slides. So at the tactical level also, that all these things integrate together. There is a tactical framework as well with which you can actually, using the AI governance framework, you can actually apply artificial intelligence towards the strategy of the war as well. Next, please. So there are, of course, drones are one example in which artificial intelligence has been applied extensively. And there are so many examples of drones, like, of course, several of them are teleoperated. But the real manifestation of drone technology is when the planes actually fly autonomously, right? So this is one of the applications areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI-powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machines that work autonomously within the battlefield. But AI goes well beyond that, actually, some of which you will see as examples in the first being presented tomorrow as well.
So there are, for example, mission-specific battlefield robots. Some of the pictures I've shown you. There are unmanned aircrafts. There's a formulation of governance of artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks and UGVs. There are like multi-aircraft coordination and control technology. There is autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine systems in general, and autonomous land obstacles and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example, one of the projects that we are doing, not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we can improve on that using artificial intelligence, right? So AI extends much beyond the core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if you look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is defense export promotion. So if you look at that, the market is expected to grow at an compound annual growth rate of 2.4% annually. So this is according to the Everden. And this is actually the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now for a lot of, this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So in the hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound annual growth rate, CAGR, expected for the hardware industry itself. So if you look at, for example, the global market share, so it's like 28.8% of global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is, so far, the development of AI is fragmented. It's not in just one place. And actually, Forbes did a very famous article in January 2019 in which they compared the American capability with the Chinese capability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technologies. So hardware and software both. So next, please. There are other statistics as well. For example, in case of the global newswire, they say that the growth rate is not going to be 13.4%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which did not include in this presentation, but for North America, for example, or certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So it's like really huge growth. Wherever people are coming, applying artificial intelligence to the industry, so huge growth rates are expected there. So this is what I was talking about, that apart from the development of autonomous and intelligent weapon systems, it is like the efficient information, you could say, retrieval, the deployment of sensors and the information which is coming, back to you, the raw intelligence which comes from the real world data, and also the automation of multi-sensor data fusion and intelligence sensing techniques to leverage better situational awareness. Once you have that situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne, and naval assets into battlefield management system to leverage tactical capabilities. So this is, also something which is being worked on by artificial intelligence, like developers who are developing systems based on AI. Next, please. So the way AI works actually is that we have at the bottom level, like I think PF Sentaik will relate to it very much, that the way that AI works is that at the bottom level there is infrastructure, of course. So like this is the hardware as well as the core software, infrastructure in which, for example, you need a lot of data to be fed to artificial intelligence through a lot of sensor networks. You require, this can be mobile, this can be cloud, this can be Internet of Things, the things I was talking about right in the beginning of my talk. Then on top of it, you've got cognitive systems. And then on top of it, you've got applications. So the good thing is that a lot of applications are, like for example, application areas that are particular to defense don't need generation of entirely different kind of algorithms. Like for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also very much applicable to the military domain as well. So for example, if you want to do object recognition or you want to do an activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity recognition will be the same, even though it is applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there is transfer learning and so many techniques that are available to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And actually this is the reason why some of the game kind of scenarios are generated where multi-agents correct with each other. And we actually want to use this scenario for machines in the, for example, tanks in the battlefield or aircrafts in the air, actually collaborate together, share information with each other, and actually fight in the real world scenario.
So if you look at, for example, segments in which artificial intelligence is divided and the impact which comes from different areas, right now, 9.6% firms are investing in the data science area, 7.8 in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, speech recognition, aerospace and defense industry. So this is particularly aerospace related defense industry. Otherwise, application defense are in all, for example, computer vision, so many applications in the defense industry. So natural languages processing, entertainment, and the list goes on. I could speak for a whole day on this. Next, please. So coming to the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side. And of course, some of them have applications toward the defense side as well. So we have been able to generate the product concepts and the proposals that we've generated are, 221 so far. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed reach around that. So it just were inaugurated in 2018. The first financial releases came in 2019. So you can imagine that it's just 3 years of work that we are actually displaying before you. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciary. This could be very useful for the military courts as well. So for instance, what we've done is that digitized data from the 70 years history of Pakistan. Whenever a new case, for example, comes in, you can enter some facts about that case into the system, and the most relevant cases from the database, from the 70 years history of Pakistan database, actually come up. And even if the decision made by the judge himself, like AI, of course, does right now the system AI does not suggest a judgment. So, but even in that case, for example, relevant cases in front of the judge can help the judge make a more informed decision, right? Thank you. Next. So I'll just go quickly. We've been working very closely with Pakistan Air Force for establishment of the CENTAC, and we have good collaboration. Next, please. Next. So this is one of our projects which will be displayed in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. And this is a medium.ai. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels. We know that fifth generation warfare is actually not just in the battlefield, but in every home, right? With the digital devices and television and everything coming into everybody's hands. And this, for example, documents whatever is being said by any person, who is saying what, and all the content analysis behind it, giving you a summary of whatever is happening during the day as well. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies have now spun off into companies like the last one. And for example, the system where we, for example, detect various vehicles, some applications, for example, for parking spaces. Next, please. So this is another one for pickets, for example, like how many suspicious vehicles or persons could any human possibly remember. So this is AI-based system which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that, it can extract which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a suspicious vehicle comes in, it can relate back with the database and stop that vehicle right there. Next, please. So this is another system, for example, in which you can detect weapons, for instance. This is object detection. You're actually detecting weapons. And on the left and on the right, you can see activity recognition. So for example, one person is crossing, in a different side, not walking in the direction where everybody else is going. So this is statistical modeling of the dominant motion in the scene. So we can actually predict with a lot of accuracy whenever somebody is doing something different from the crowd. So this is good for mob analytics. Next, please. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever persons, for example, are holding sticks are pointed out separately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, if two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed, because in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? So detecting a weapon only may not mean a lot. But something being done with the weapon actually means something, right? So this is why, for example, this is activity recognition. And when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please. So this is like just a glimpse from the lost and found system that we've been able to deploy with the Punjab Safe City Authority. And I'm happy to share with you that in the past year, in one of the very major events that was taking place in Lahore, we were actually able to catch some of the miscreants using the artificial intelligence-based face recognition technology, using our completely home-developed systems, actually. Next, please. So these are medical applications. One system that we've developed for thalassemia detection and assessment, another one for breast cancer. Next, please. So these are two other systems. Brain-based, there's a very popular system for brain tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, and also for tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please.
Just actually, I think day before yesterday, our system has been deployed in the PIMS hospital in Islamabad. So another initiative, which, for example, you should all know about, is the AI Techverse competition that we organized. So this is initially it was scheduled in these dates, but we moved it forward because of ideas, and it's going to be scheduled, inshallah, in the coming February, inshallah. So if you want to, for example, we are going to sponsor a prize money of ₹1 million in this for the winner. And if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want to entice people to develop a product of this sort, and you want to offer a prize money for the one who develops the best product, you're welcome to contribute to this. And otherwise also you're welcome to visit. Next, please. Also, like to address the need of the defense market, and particularly the shortage of AI human power, which could actually develop efficient algorithms, a professional level human manpower which is required. We've started the Certified Artificial Intelligence Program, the CIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to develop the expertise, it's a 4-month long course in which they can develop their expertise. Doctor, last 2 minutes. Already finished, sir. Okay. Next, please. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you're very much welcome to do that. I got the time up reminder, so this is why I really hurried up with the things. Thank you very much. I hope you enjoyed the talk, and I hope we interact and get on some real AI stuff together. Thank you. मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर